may mention serial number 23 from today's list. Serial number 23. This I informed the other side last week. Small issue of jurisdiction. Jurisdiction of the court which has passed the judgment. The jurisdiction would lie with the commercial court, but the civil judge had passed it despite our application to transfer it to the commercial. They were bound to transfer it? Yeah. They were bound to transfer it. Well, Who's that? Mr. Indrajit. Call him. Come at 2:50. He will be here at 12 o'clock. I think 12:30 रखें वो मैटर 12:30 में एक मैटर है कब रखें 12:30 में W3.348 उनसे 5 मिनट पहले आ जाएंगे तो वो मिल जाएगा उनसे मिलना मुश्किल है थोड़ा सा चलिए From supplementary list, this case, item number 409, second April 63 of 2021. क्या वो इंस्ट्रक्शन क्या है इंस्ट्रक्शन पार्टी को बुलाएंगे लॉटरी पे ऑन द वे रास्ते में आ रहे हैं तो विड्रॉ करने का इंस्ट्रक्शन है कि नहीं टीम बुला लिए वैसा आपको कब तक आ जाएंगे चतरा से चले हैं लॉटशिप लेकिन रांची पहुंचे आने में हाँ 1 घंटा लग जाता है सेकेंड हाफ के लिए रख लीजिए 2:15 बजे आपने वकालतनामा फाइल कर दिया किया कि नहीं किया वो कल जाओ फाइल कर सकते हैं From supplementary list for final disposal item 1, first April 37 of 2022. There was a direction to produce the original documents. To the extent the originals are supposed to be in my possession, I am passing on. This chart will depict the leadership, which all documents are produced. Rest, by the very nature of transaction, is supposed to be with them. Just a minute. What is the ID? This IA number. Two 2067. 6. 2067. The list of documents. Let us see each one of them. किसका किसका क्रॉस लगाना है किसको ओके करना है पेज नंबर 14 annexure 1 is what annexure 1 is just a list इसका तो कोई It is मतलब just a नहीं list, it's a self-serving document. we can ignore this because this is not a document This I cannot press upon the We'll ignore. And in any case, next page no, this document actually it is, just give me 1 second. The first document was this is not a document this is just list the bottom one on No, left hand whatever side it you is. will find. See, the document in original has to be seen. Merely there is a list that has got no relevance. So that document is produced with them. This list is to show what documents was received from them and given. We will not. This This is of no use. The next is page 14. 14. Have you produced the original of this? This original is supposed to be with the That is not your case in the idea. Calling for the document is not your case. So this also you cannot do. Next page. that also I am not able to use because it is addressed to DGM. Next page. It Page 16. is also between the two respondents. Page 17.
Page 16, 17 are the same. That's Next document is Page page 18. Page 18. Is there? That's also a correspondence between their brothers, that is respondent to GM Steel Plant, that's Not respondent. Not there. This document also not produced in original? Bear with me for a minute. Produce, original I am not able to produce. This That- document was that's given. enough. This We will document was not given hear- by me. We to will them. not hear anything more. You are not able to produce and that's all. Page 19, Please come to page 23. Sorry. we'll go one by one, no? We can't ignore any case. Sorry. Page 20, not there. Leadership page 19 Yes. is annexure IA5, which I have given today. The original of this? IA5. This document on the bottom, left hand side, bears Just my a seal. moment. Page 19 as such is not there in the list. Line, oh, this one. First document. Therefore, in the list I have mentioned which annexure number is the particular document. In the list, your ladyship will find the column which I have set out. This one. Right? This is page number 19. Page number 9. Yes. What else? Then straight away, your ladyship may come to annexure IA11. You straight away point out whatever original. Page number? IA11 is page number This one. 28. Page number 28. Only 4 of the 14 annexures I am able to produce. No problem. Then 15.7. Then 20. Then what would be the next page number? The next page number would be annexure IA13, which is at page 30. Here, Page number 30. yes, what I intend to produce is the receipt, postal receipt. It is already there. In the photocopy it is there. In the photocopy which I had filed, there was photocopy. That's right. So I have to produce the original. You have produced the original. That's what I am saying. That's seen. That's what I was pointing. How many days? So annexure IA13 is all those correspondent communications which I sent to them. The postal receipts are either stuck on the first page or overleaf. I mentioned that. What is next page? 10, 11, 2008. 10, 11. This is page number 31. 31 and 32 are enclosures to 30. 30 is the covering letter. 32. So 31 and 32 Yes. were sent with the help of this postal receipt. Then 33 your ladyship will kindly come to. This is the There is some, it cannot be. Page 30 is dated 15th July 2010 and page 31 is 10/11/2010. Then again your ladyship will find
No, this is a photocopy. This is not the original. Which one, Your Ladyship? This page number 31. Naturally, the photocopy of a document containing 3 pages, which were sent by the postal receipt, which is in original. So the intention is to produce the original of the postal receipt. Please see the first page. It says You enclosed. see, the point is that if you want to rely upon this page number 31, Yes. right? We need the original also. It is the original of this document. This is a photocopy. We do not know what all you enclosed with that. If you want this document to be marked as exhibit, there is the original of this. So Your Ladyship only mark one page of this. Only page. That is postal receipt. 15 Only the receipt will be marked, not Page even the. 30 will be marked. To be fair, even entire page 30 may not be marked. Yes, To be fair, that is also entire page 30 is not actually the original. I must disclose this. The postal receipt only is the original. Entire thing, I have enclosed the entire thing only to explain the circumstances, nothing else. no. It will be marked by the court, will be No, only no, what that is can be another marked as thing. evidence. It will not. You see, there is no question of. I did not want to segregate I did not want to segregate the pages of a particular document which I am finding. There is a particular document which is IA number so and so. It is running in 3 pages. On the part which will be in original and therefore capable of being marked is only a portion of one of those 3 pages. That is the postal receipt Yes. and nothing more. But those are not originals. For that I need to undertake some other exercise. That's a different thing. Okay, fine. Only the postal receipt, correct? You have given the list. Only postal receipt is to be marked. Right? What else? And then the next document, page 33, starts. So, page. Postal receipt is at page 36 that I have given. Sorry, 19/6/2019. 19/6/2010. And this year IA 14. IA 14 contains 4 or 5 documents. All were sent by either courier or post, registered speed post or registered post. So each one's postal receipt is there. Page number 31 is again photocopy. Kindly go to 35 stated. So 35. after, yes, 35. Page number 35 35's is postal the receipt original is letter, yes. right? So 35's postal receipt is Postal receipt 36. is there, 36. Yes. Then 37 is again photocopy only. Yes. Page 35 is 37. also photocopy. 35 is also my office copy. But So it can't be treated as original document. contains the original signature. So Whatever it is. that's there. But again, I should be fair. In office copy, if I put a original signature, it cannot be treated as original of what was sent. Whatever it is, you see, you have produced the original of whatever you have produced through the IA. This is what I can say at this stage, nothing more. You have produced the original of whatever you have annexed to that. So far as that document Ladyship is speaking in my favor. I I have to will- speak against myself. That's all. To We'll be see a- that. To be Okay, fair what else? What as a else? counsel. Then ladyship, likewise, ladyship, each page ladyship will find there is a letter and then the postal receipt either overleaf or stuck on the same page.
Now this is all your leadership that I could do with my limited ability. During the course of hearing of this case, the learned counsel for the appellant has produced original of some of the documents and has filed, which have been filed along with IA number 2067 of 2024. During the course of presenting these documents, it transpired that the annexure IA-13, which is a letter dated 15/7/2010, is a photocopy and not the original, and the postal receipt has been produced in original. So far as other correspondences are concerned, all as contained in annexure IA-14 series, all the documents are photocopied with their original postal receipt or courier receipt, with original postal receipt or courier receipt, except one letter contained in one letter dated 19/6/2010, which has which appears to be the original. I cannot say that. Original of The office copy. original of page number 37. of that. And that should be sufficient. We are seeing your documents. Now you start with that. Your leadership, please give me some time. I will not give you I any. have gone to home and watched all my previous sins. No. You start with the abundance. This appeal has to be admitted. Plain written statement. May I submit my leadership? This appeal has to be admitted. Has No, not been it admitted. has already been admitted. Yes, yes. It has been admitted on 31/1/23. Records are here. Please give me some time. No. 1 or 2 days. You start. 1 or 2 Let days. us start. No. चलिए. Plain. Yes, read your point. Plaintiff firm, namely Technox, was a registered proprietary firm executing contractual work and providing engineering consultancy services to various firms contractors on the basis of remuneration as fixed and determined between plaintiff firm and other contractors firms. Defendant, principal defendant. Just a moment. इसकी कॉपी आपको मिली है फोटोकॉपी? Copy मिली है. पूरी की? पूरे की, but ma'am, I will have to discern which are original, which are not. Because there are some documents in this one which are not. हमने देख लिया है. आप भी देख लेंगे. कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है? तो इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट इसमें है नहीं. हाँ बताइए. इसी आज के लिए कंप्लीट करते क्या मैटर है? हैं। Paragraph 2. Principal defendant Udaya Brothers is a registered contractor of Seal Bokaro Steel and has often awarded contract with Seal BSL Bikon, so and other private companies against the tender issued by them for execution of project for civil, structural, electrical and other works. The principal defendant was frantically in search of an experienced person through which they could compete in the SAIL BSL pro forma defendant tenders for project works where design, engineering, supply, erection, testing and commissioning are involved and could get the contract for such projects. Principal defendant approached to the plaintiff for the help of engineering and consultancy for the proper execution of work and smooth running of its contract business, if any awarded to the principal defendant by the SAIL BSL pro forma defendant and other lands of SAIL on the basis of having vast experience and knowledge of steel plant in India and abroad of the plaintiff
plaintiff, president and CEO of Techno Expo for more than 36 years. The plaintiff became ready to provide technical know-how and assist technically to provide all backup and support to the principal defendant for the proper preparation of bids and performance on the project with his technical skill and knowledge. Subsequently, a tender was issued by tender notice number so by the pro forma defendant for civil, structural and electrical works for PCB extension for new turbo blower number 08 P3 and Bokaro steel plant. Principal defendant thereafter requested the plaintiff to assist the principal defendant in the full tender for preparation of the technical bids with his specialized skill and knowledge, and also requested for doing entire coordination for the above mentioned project between the SAIL BSL, consultant CET and the principal defendant. The defendant also authorized the plaintiff to collect, submit tenders, drawings, letters, clarification points and or any other documents related to the above project. The principal defendant also authorized the plaintiff to attend opening of techno-commercial bid, price bid, techno-commercial discussions and negotiations, or and any meetings on behalf of the principal defendant and to take suitable decisions and sign any documents related to the above tender. The said authorization was addressed to DGMP in charge tender and claims BSL and a copy given to the plaintiff. Plaintiff accordingly on the basis of the discussion and said authorization letter of the principal defendant, the plaintiff prepared and submitted the techno-commercial offer on behalf of the principal defendant. Plaintiff also prepared all techno-commercial clarifications, submitted the same to BSL as and when asked by BSL. During techno-commercial discussion which the plaintiff had with BSL, plaintiff emphasized the technical points for getting a chance for submission of revised price. Subsequently, plaintiff also issued a letter dated 6/6/2007 and a fax letter dated 8/6/2007 on behalf of the principal defendant to SAIL BSL, explaining the detailed reason for getting chance for submission of revised price bid. Accordingly, the chance for submission of revised price was given by SAIL BSL and the competitive revised price was submitted on the basis of which the principal defendant became the lowest bidder. After completion of all tendering process, the principal defendant became technically and commercially suitable and also L1 in the price bid due to the expert knowledge of the plaintiff. Accordingly, the work order against the aforesaid tender was awarded to the principal defendant via work order number so and the contract agreement number so was signed on dated so with the total contract value rupees so inclusive of all taxes, duties, levies and settlement amount. It is further submitted that after the price bid a MOU cum working agreement was prepared between the plaintiff and the principal defendant on 11/9/2007, which was signed by both the parties in presence of two witnesses and was also authenticated by the notary public. In the above agreement, which was executed between the plaintiff and principal defendant, was specifically mentioned in the terms and conditions of the aforesaid agreement, which is not described below, that both parties mutually agree to work together for preparation and submission of the techno-commercial bids, preparation and techno-commercial discussions, and submission of required clarification for the above mentioned project at Bokaro steel plant. And in case of award of the contract, they will take up detailed fabrication, design, dismantling, fabrication, supply, erection, execution, civil, testing, and commissioning of the PCB extension, and establishment of the performance guarantee parameters as per provisions of the contract. Plaintiff and principal defendant, therefore, for good and valuable consideration of mutual promises intending to be legally bound contained therein, have agreed hereto in the said agreement as mentioned in so of this plan. As per clause 3 to 7 of the aforesaid agreement, the plaintiff was to arrange design and engineering for the project and provide all technical supervision in the area of fabrication and erection of structural items and civil execution work as per mutual understanding in clause 2 of the agreement. It was clearly mentioned the details activities which were carried out by the plaintiff before signing the agreement of mutual discussion and understanding. It was also further mutually agreed in the said agreement inter alia that the plaintiff shall be responsible for all coordination work, correspondences, preparation and submission of bills, project monitoring and progressing and arrangement of drawings, arrangement of items, plants and equipments, components from domestic sources at the most economical rates on behalf of the principal defendant. In clause 7 of the agreement, it has been clearly and specifically stipulated that the payment shall be released by BSL in the name of principal defendant, and principal defendant immediately on receipt of the check issued by BSL shall in turn issue a check in the name of plaintiff, which shall be equivalent to 15% of the value of the check issued by BSL after adjustment of the taxes, duties and miscellaneous expenses, and further that any expenditure made by the plaintiff in procurement of material or otherwise shall be reimbursed by the principal defendant. Now it is also relevant to mention here that clause 9 of the aforesaid agreement clearly stipulated that the MOU has been made in good understanding with both parties and shall be respected faithfully and true and nobody will back out in the commitment for any reason whatsoever. Respecting the agreement faithfully, plaintiff extended all services as per the stipulation of the agreement. It is submitted by the plaintiff that when a check of rupees
50 lakhs and what was released to the principal defendant by sale, the plaintiff sent his bill of rupees 2 lakhs and what to the principal defendant. Similarly, when second and third bill was released to the principal defendant by sale of rupees 68 lakhs and 53 lakhs respectively, the plaintiff submitted his bill for rupees 10 lakhs and what, and white invoice number so and so 7 lakhs and what respectively, but in spite of several requests and reminders by the plaintiff, principal defendant only gave oral assurance and did not pay a single farthing to the plaintiff after disregard to the terms and conditions of the proceeding agreement. Plaintiff thereafter was also entitled to get payment of rupees 10 lakhs against its fourth bill, white invoice number so and so dated so and so, which was handed over to the principal defendant during discussion for settlement outside the court. With the payment already received by the principal defendant from BSL amounting to 62 lakhs, and fourth invoice is also attached here, which is due for payment to the plaintiff. The plaintiff further submits that the principal defendant received total sum of rupees 2 crores and odd on the basis of the invoices prepared and submitted in association with the plaintiff, and payment was released by sale BSL on the basis of regular follow-up by the plaintiff. The documents which was issued by BSL after release of payment to principal defendant were received by the respective entities of the plaintiff. It is worth mentioning that sale BSL does not hand over the payment documents to any unauthorized person. In view of the agreement, the plaintiff ought to have received total rupees 30 lakhs, for which invoices were submitted by the plaintiff on behalf of the defendant, but the principal defendant, in spite of aforesaid submission of invoices by the plaintiff for the settlement, failed to pay even a single farthing to the plaintiff, and even did not send any reply to plaintiff's various correspondences, completely ignoring the terms and conditions of the agreement. Plaintiff, seeing the bona fide intention of the principal defendant, sent a legal notice to the principal defendant by notice dated so and so through Shri Bhanu Kumar Advocate, Ranchi, stating therein to make payment for the pending bills of the plaintiff as aforesaid, failing which legal proceedings would be taken against the principal defendant. Principal defendant, in reply to the aforesaid legal notice of the plaintiff through the advocate letter dated 19/2009, clearly agreed to amicably resolve the issue across the table and also agreed to suitably compensate the plaintiff for their having provided technical know-how. Principal defendant also requested the plaintiff not to go for any legal action as mentioned in the legal notice. Reference paragraph 3 and 4 of the advocate letter of the principal defendant. In the advocate letter dated 19/2009, the principal defendant raised some baseless points about fulfillment of the obligation of the plaintiff, which was clarified by letter dated 15 March 2009, issued by the advocate on behalf of the plaintiff. It is to be noted that the principal defendant, while making personal discussion with the plaintiff, said that he has empowered Mr. Rajgopal, manager of the defendant, for negotiation and finalization of the pending bills, but that was also far from the truth. The plaintiff, while making reference to the settlement and negotiation and empowerment of Rajgopal for negotiation and finalization of various correspondences, but the defendant did not send any response to those correspondences also. The plaintiff further submits that the principal defendant failed to perform its obligation as per the aforesaid agreement. On the contrary, the plaintiff performed its part of obligations as per the agreement, and this part cannot be denied by the principal defendant in face of documents available with the plaintiff. The plaintiff further submits that the principal defendant, forgetting all the conditions of the agreement dated 11/9/2007, and received the various letters and reminders, did not reply any of the letters and reminders except sending 2 letters, 4 dated also, in which the defendant offended the plaintiff by mentioning that the plaintiff has not performed his obligation as stated in the agreement, is not entitled to get any payment. Said statement of defendant is illegal without any basis, and same amounts to breach of contract as well as breach of trust. In one of the letter, the principal defendant even mentioned about clause 2 of the agreement, mentioning the same was not performed. So the truth can be judged well that the activities performed before agreement and forming a part of the agreement in clause 2 have been flatly denied by the principal defendant. It is submitted by the plaintiff that the principal defendant has not signed the instant agreement in the dispute with the plaintiff. Rather, the defendant has signed and made total 5 agreements, including the subject one with the plaintiff for various other projects in various units of sale, where the plaintiff has played a vital role, and accordingly the credentials of plaintiff's firm is widely known to the BSL officials as well as other contractors, and the said cannot be denied by the defendant. Plaintiff further submits that during the course of correspondence, the principal defendant never disclosed his intention either orally or through written reply to the plaintiff's letters regarding termination of MOU agreement at any point in time. But the principal defendant, while replying by letter dated 20th of June, to plaintiff letter dated 31/3/2011 and 25/2011 for the first time, came up with a plea that he has already terminated the contract on the ground of plaintiff's failure in performing his part of obligation. The said statement of principal defendant is completely false and fabricated for the purpose of having the new MOU agreement. In the MOU agreement dated 11 September 2007, there is no provision for terminating the agreement by any party.
Clause number 11 clearly stipulates that in case of any difference, both the parties shall discuss and resolve the issues. In case the issues are not resolved, the matter may be referred to local court, high court of the state of Jharkhand as per the provision law of the land. Violating the above terms and conditions, the judgment has mentioned in their letter dated 26/2011 that the agreement was terminated by their previous letter, but without any reference to such previous letter. Plaintiff, however, showing his good gesture and with a view to mitigate the matter and to avoid entering into long procedural litigation, also see the earlier proposal of the principal defendant to settle the matter across the table, filed a pre-litigation case in the court of permanent lok adalat, being agreed to settle the claim even at 24 lakhs only, but the principal defendant, while appearing with the said pre-litigation case, declined to settle the same. As such, the case was closed by the Honorable Permanent Lok Adalat with the remark: claimant applicant is at liberty to seek legal remedy in the court of competent jurisdiction against the principal defendant. So, while replying the contentions of plaintiff's claim before the Permanent Lok Adalat, challenged the jurisdiction of said Permanent Lok Adalat and also made so many contradictory statements. Principal defendant, while replying to the said pre-litigation case before Lok Adalat, sometimes admit the MOU agreement between the parties, and at the same time he says that the MOU was procured under coercion, fraud and misrepresentation, and hence it is void agreement. It is worth mentioning that in their advocate letter dated 19/2009, the defendant has already agreed the contents of the MOU agreement, has agreed to compensate for technical know-how provided by the plaintiff. All the allegation statements as made in the pre-litigation case by principal defendant false and fabricated, the same are not legally enforcement tender. All the allegations set forth that imply a manufactured and modified intention to grab and frustrate the genuine and legal claim of the plaintiff. Pre-litigation filed before the Permanent Lok Adalat did not materialize due to non-cooperation of defendant. The same was dismissed also, and as the plaintiff finding no any alternative remedy, state suit is filed. We may skip paragraph 37 and 38 if it is allowed. Yeah, just a moment. Altogether, 4 bills were raised, claiming to be 15% of the amount already received. Yes. That we find that is for an amount of rupees 30 lakhs. Yes. And then you say that, I have agreed for 24. just a moment, then you say that you are entitled to get 42 lakhs 56,665 at para 40, 15% of the total value of contract. And extra. And extra claims, para 40. Just a minute, para 40. Total contract value and extra claims. Yes, you see para 39 gives the total contract value and the estimated extra cost, that is 283,764, correct? The total value of the contract comes to rupees 288 and all. Out of which the defendant number 1 has already received 2.04, and you had raised 4 bills totaling rupees 30 lakhs, and then you say that 15% of the total contract value you are entitled to receive. And the extra claims. Just checking. Yes, contract value and the extra claims you are entitled to receive, correct? Yes. And then you say in para number 46 that you are entitled to 62,77,000. This 62,77,000, I don't find it any sequence to come to this. Let me see Schedule A. Schedule? Refers to Schedule A. This paragraph refers to Schedule A. There is no schedule A as such. Schedule A to the pre-litigation after 3 pages. There is no schedule A. Affidavit and that's all. After that, there's no schedule. There is no schedule. Late pre-litigation does have Schedule A. It's there with me. My plate's copy. It is. There is no schedule. The one with me contains this seal of court also, because this entire plate was marked exhibit. So what I have with me is the exhibited plate. In the suit, exhibit Where 1 is the reference of schedule A in the plaint? paragraph 46.
So this 62 lakhs is on the basis of some schedule A. Yes, that schedule is but- there, part of it. Will addition, please take evidence, exhibit 1. Exhibit 1 Yes, is the plaint. yes. Yes. So I have got the copy of that exhibit which has been taken out from the court that contains the schedule, because the exhibit copy will have mark and seal of the court also. That is there with me. Exhibit 1 is just the plaint. Okay, what is the breakup? We are not able to get that. Anyway, we'll take it. What is the breakup of 67 lakhs? May I pass on my? Yes. Both of us will see from one copy. Yes. How do you reconcile the statement in paragraph 42 and this? These are the 4 bills. Then you have the total contract price. Then payment received 204. Balance to be received is 57 lakhs. Value of claim submitted. What is value of claims submitted? Add 21 lakhs. This finds nowhere in the plaint. There is no mention about this in the plaint. You see, A, you have 30 lakhs, then you calculate interest, so the amount is 50 lakhs, correct? On 30 lakhs you calculate interest from the date of receipt of payment. On 30 lakhs you have a claim of interest of 17 lakhs. And then the amount for which work has already been completed but payment is yet to be received, right? Yes. This is 8 lakhs, with interest. Right, 57 lakhs, then you claim 15%. Extra work done. No, extra work is already included. It's already included. This value of the claim submitted. Extra work is already included in the plaint, as is mentioned in your own plaint. So your claim is primarily 30 lakhs and odd with interest, and the further amount which is yet to be received. By Yes, and as per the agreement, you were supposed to get 15% upon receipt of the payment. So this is partly is in anticipation and partly is in connection with which is already received. Correct? इसका एक copy दें. ठीक. this is exhibit 1. It ought to be there in the LCA. It's okay. We don't bother about it. It is there in the plaint. So I just want, because this breakup is not available in the plaint at all. You just straight But away then come to. schedules are actually meant to give a one-page synopsis of the entire No, thing but which it has to got be there in the pleaded. plaint.
You are seeking interest at a particular rate from the date of receipt of payment. That is not there. And you see, you are claiming 21 lakhs. That is not, there is no whisper of it in the plaint at all. So this schedule is not supported by the plaint. The 67 lakhs or whatever No, is. in leadership it is open for anybody to make appropriate pleadings in the schedule also. That also forms part. It's just a matter of form in substance. But then I agree that in the schedule is not enough of disclosure of facts which There's would make nothing. out about anything about that No, particular normally facts. you see, you have a chart, ready chart for the court to peruse, but at the same time you have to have foundational pleading as to how, and it is inconsistent. The schedule is also inconsistent because in your plaint you say that the extra work and this amount included the value. You have stated so in the plaint. I'll try to have the clarification. Okay. Now what happened? This is the plaint. Written statement is in complete denial. But so far as the facts, And there are two written just statements. two more observations. There are numerous documents of the defendants which you have referred to in the plaint which you had received, saying that you have not performed the work or you have not done this, whatever you have stated so in your plaint. But those are not exhibited. You are referring it, but you are not exhibiting those documents. So those documents, I think, did they exhibit those documents? They also did. Few means which document? They have exhibited the letter of termination, Yes. the legal notice, the bills with regard to payments that they directly made to the consultant, and letter of termination. Letter of termination is there Yes. and the reply to legal notice is there. Correct? And so far as other documents are concerned, even they No, have the not. documents which your ladyship referred to are not there. No. Letter of termination is dated. 15/10/2007, 15th October, Exhibit B. So 15th October 2007. No, This- Exhibit B is not letter of termination. Actually photocopy. Letter of termination is marked. Exhibit B and then and then mark Y and Y1. Y and Y1 because it was photocopy. They never produced the original letter of termination. Our case is that they never gave us letter of termination. Only in their reply in 2011, for the first time, they said that earlier we have given you letter of termination, which we dispute, and therefore it was incumbent upon them to prove it. They have not proved that letter of termination. That letter of termination is at Exhibit B. 15th October 2007. 15th October 2007 is the letter of termination. Indeed, Maharaj. In fact, the heading also says termination MOU dated 11 September 2007. Exhibit B, termination of MOU. Maharaj. This has been marked without objection. or Not with objection. With objection. With objection. But this is marked as Exhibit B. It has been marked as exhibit. We further surprised to know that you have mentioned 15% of the total payment to be received. Even this clause is under cloud. By virtue of this 15/10/2007. Is there any reference to or this letter in your plaint? In my plate, I say that for the first time they talk about this in their 2011 reply to my legal notice. They have annexed the postal receipt also, speed post receipt. The original receipt. The postal receipt to this letter. Two postal receipts marked without objection, exhibit C and C by law. Our in the plate we said, just come to that time. Paragraph 30.
Arab 30. Yes. So we say that for the first time they speak about termination is in 20th of June 2011. And that is what we have set up as our cause of action also. Now, how many witnesses will it be? Leadership with regard to whatever I have accepted in my plate as having done on their behalf for sale. Sale in their written statement is not denied. Sale has nothing to do. They are not party to this agreement. So that's a different thing. I'm talking about what I have done. To which Yes, sale. we will see everything. Certainly, in first appeal, we have to see everything. What is the name of your firm? Appellant? Techno Expo. Techno? Techno Expo. There are two witnesses on behalf of the plaintiff. The first one is most important, Ajay Kumar Singh. Just. What is the date of termination? 15th October 2007. The MOU is dated 11/9/2007. The termination is dated 15th October 2007. Next month. That's कौन से witness हैं? दो witnesses. Who's witness number 1? Ajay Kumar Singh. Lead an employee. Lead means at the time of transaction.
Yes. Paragraph 5, 6, 7 will be treated as one. वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के बीच दिनांक 11/2007 को एमओयू कन्वर्टिंग एग्रीमेंट बना। इसके तहत एक साथ मिलकर बीएसएल के द्वारा एक निविदा में कहा गया था कॉन्ट्रैक्ट उनके पास में आवंटित होने के साथ साथ काम करना। यह कॉन्ट्रैक्ट सो से संबंधित था। उपरोक्त टेंडर का वर्क ऑर्डर प्रतिवादी संख्या 1 को मिला था, जिसमें वादी को उपरोक्त आपसी समझौते के आधार पर प्रतिवादी के साथ मिलकर टेक्निकल और कमर्शियल ऑफर उस क्षेत्र में अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज के आधार पर सबमिट करना था। उसी आधार पर निविदा बनाकर बीएसएल में जमा किया गया। उसकी सारी प्रक्रिया वादी के द्वारा पूर्ण रूप से संपन्न किया गया। दिस इम्पोर्टेंट, दिस माई केस। चूँकि वादी अपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज के आधार पर उपरोक्त एमओयू में वर्णित सभी तथ्यों शर्तों के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 को उक्त वर्क ऑर्डर को कार्यान्वयन इम्प्लीमेंट करने में सहयोग किया। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 एमओयू मैंने पढ़ा था, दोनों पक्ष के बीच तय हुआ था कि बीएसएल के द्वारा उपरोक्त कार्य संबंधित चेक प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से निर्गत होगा। प्रतिवादी संख्या 1 चेक प्राप्ति के बाद वादी का चेक अकाउंट को 15% सिविल टैक्स नोटिस अधिक खर्च पर एडजस्टमेंट के बाद वादी को देगा। वादी प्रतिवादी संख्या 1 के बीच पहले भी इस तरह से कई एमओयू करार बने और प्रतिवादी संख्या 1 पहले भी वादी की स्पेशलाइज्ड टेक्निकल सहायता के एवज में भुगतान किया है। वादी और प्रतिवादी संख्या 1 के साथ पुरानी जान पहचान है। प्रतिवादी संख्या 1 बराबर वादी का विशिष्ट अनुभव और लाभ उठाते हुए वादी को अनुभव के आधार पर मेहनताना एक कॉन्ट्रैक्ट में जो बीएसएल में हॉट स्ट्रिप मिल में कार्यरत है, उसको प्रतिवादी संख्या 1 ने भुगतान किया था। एंड दैट्स अबाउट अनदर कॉन्ट्रैक्ट। प्रतिवादी संख्या 1 उपरोक्त कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित वादी को 3 बार चेक बीएसएल द्वारा निर्गत होने के बाद भी 15% की दर से एमओयू के आधार पर भुगतान नहीं किया, तो वादी ने लिखित पत्र के द्वारा मांग की है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 वादी को न भुगतान किया और न पत्र का जवाब दिया। बीएसएल के द्वारा उक्त कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित चेक के माध्यम से भुगतान पाया, लेकिन बीएसएल के द्वारा भुगतान होने के बाद किसी भी चेक के अमाउंट को 15% से भुगतान नहीं किया गया, ना ही पत्र का जवाब। यह कि कॉन्ट्रैक्ट नंबर संख्या 16 चार्ज चेक के द्वारा प्राप्त कर चुका है। 15% की दर से भुगतान वादी को नहीं दिया, वादा खिलाफी किया, एमओयू के आधार पर पाने का अधिकार है। बीएसएल से प्राप्त चेक अमाउंट पर 15% के साथ उस पर इंटरेस्ट में पाने का अधिकारी है। वादी का जो भुगतान नहीं हुआ तो हर केस में अन्य खर्चा पाने का अधिकारी है। प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा इस केस में दाखिल जवाब की सभी दलील अनुगणन बनावटी है। प्रतिवादी एमओयू दिनांक 11/9/2007 की शर्तों का उल्लंघन किया है। वादी सभी तथ्य सही हो सकते हैं, ना सकते। इस क्रॉस एग्जामिनेशन शॉर्ट क्रॉस एग्जामिनेशन हम वादी को जानते हैं, पहले हम उनके यहाँ काम करते थे, हम नहीं करते हैं। बकाया राशि 30 लाख रुपये वसूली के लिए मुकदमा वादी ने किया और प्रतिवादी ने किया। सो इन क्रॉस एग्जामिनेशन दे हैव ओनली टेकन कन्फर्मेशन ऑफ व्हाट आई हैव सेड। 30 lakhs for recovery of 30 lakhs. In cross examination, you have stated, your witness has stated that this case has been filed for recovery of 30 lakhs. वादी की हम प्राइवेट नौकरी करते थे, इसलिए मैं जानता हूँ वादी के फर्म में 2004 से 14 तक काम किया हूँ। टेंडर उदय ब्रदर्स ने कब दाखिल किया था याद नहीं। आगे के ESI GN एंड डिटेल्स के द्वारा तैयार किया गया। उक्त कार्य स्ट्रक मेक प्लीज मार्क उक्त कार्य डिज़ाइन एंड डिटेल इंजीनियरिंग स्ट्रक मेक इंजीनियर रांची के द्वारा तैयार किया गया। दैट्स द फर्स्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दैट आई फाइंड। उदय ब्रदर्स के अलावा कई कंपनियों के साथ काम करती है और कोई प्रमाण में दाखिल नहीं कर सकता क्योंकि इस कंपनी में अब तक मैं अब काम नहीं करता हूँ। टेक्नो एक्सपो के फर्म शॉप्स एंड स्टेशनरी रेंटल्स में निबंधित है। फर्म का रजिस्टर है, नंबर याद नहीं है, सेल्स टैक्स में निबंधित नहीं है। फर्म का अंतिम मार्कर वर्ष 2014 में दाखिल किया गया था, मेरी जानकारी में है। 2004 में फर्म की आय कितनी थी बता नहीं सकता हूँ। वर्क ऑर्डर में मेरे फर्म द्वारा कितना रुपया निवेश कर लिया अक्षरशः याद नहीं है। निवेश के संबंध में कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकता हूँ। उदय ब्रदर्स को वादी ने कब बिल दिया था याद नहीं है। हमारे फर्म में हमारे CEO प्रोजेक्ट के निरीक्षण अभी तक कब Important invoices shall not be submission of invoices. Just let him complete. कार्य के निरीक्षण हेतु CISF के पास सेक्शन के पास CISF पास सेक्शन द्वारा पास इशू किया गया था और पास किस तारीख को निर्गत किया गया था याद नहीं है। इसका कोई प्रमाण भी मेरे पास उपलब्ध नहीं है। ऐसी बात नहीं, हमारे फर्म को इसमें नहीं है। हमारे फर्म इसमें कार्य के लिए आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है। ऐसी बात नहीं कि वादी का दावा गलत है, उसका स्टाफ होने के नाते इसमें कानून छुट्टी पाई है। दैट्स व्हाट मे प्लीज द अदर वन। Just a moment. उक्त वर्क ऑर्डर में मेरे फर्म द्वारा कितना रुपया निवेश किया गया है, he does not know. निवेश के संबंध में मैं कोई दस्तावेज दाखिल नहीं कर सकता। मतलब any expenses incurred, he is not able to give any document in respect of the expenses except the bill.
Uttar Pradesh Bill में is founded upon 15% clause, and the expenses is extra. No, According no, to the no. MOU, it Just says a moment. 15% plus expenses will see be reimbursed. whenever any person is executing a work, there has to be expenses incurred by that Leadership person. about the service that I am rendering. It's There will not be no only expenditure. service. You say that structure make engineering had done that. Did you produce any document showing that you paid such and such amount to structure make Leadership, engineering? that's not required in my respectful submission, because the contract between us, which we are trying to enforce, that clause says two things. One is 15%, and second is the reimbursement of expenses incurred. See, the point is, you say that you have performed. They say that you have not performed. Please bear with me. It's whatever, whether if we have performed, then we are entitled. The contract which I claim to have performed says two things. Second part is reimbursement of the expenditure incurred. Therefore, if I am not able to prove expenditure incurred, that will not disentitle me to the first part, No. which is The 15%. point is that it is inherent in your work that you will incur certain expenses, And therefore, which there is contemplated in the therefore there is a If blanket you are- clause. If you are not able to prove the expenditure incurred, and if they deny that no work was performed, then it has a bearing in that. Yeah, it has bearing. If I'm not able to prove, then the If you are issue not able to prove any expenditure, it will have a bearing on on the whether issue the of actual work was actually performed. performed or not. So therefore, this particular statement in the cross-examination assumes importance. Even for issuance of pass to BSL, that document has not been produced. मेरे पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि BSL में घुसने के लिए पास लगता है. बिना पास के आप अंदर नहीं जा सकते. किस तारीख को निर्गत किया था याद नहीं है, कोई प्रमाण अभी उपलब्ध नहीं. पास है तो पास तो प्रोड्यूस होना चाहिए ना, that they entered. तो पास तो वहाँ रख लेता हूँ. कौन रखे? नहीं. छुट्टी के बाद ये भी बोलते हैं ना कि रख लेते हैं. हम लोग क्यों एज्यूम करें कोई भी चीज? बोलते हैं ना कि भाई काम खत्म होने के बाद पास हमने सरेंडर कर दिया. करेक्ट? That's all. So far as second witness. सतीश कुमार शरण. एक Paragraph 5 and 6. उस कार्यादेश का काम भी इसी द्वारा उस समय मैं उस जोन और पावर प्लांट का कार्य देखरेख करता था. ही इज फॉर्मर ऑफिसर ऑफ BSL, सेवानिवृत्त DGM BSL. मैं उस जोन एस एवं पावर प्लांट का कार्य का देखरेख करता था. वर्कशॉप में मैं 2010-11 तक का जोनल इंचार्ज था. प्रतिवादी का उपरोक्त कार्यादेश मेरे अधीनस्थ कार्यान्वित हो रहा था. मुझे जानकारी है कि वादी प्रतिवादी की तरफ से उपरोक्त कार्यादेश में टेक्निकल एक्सपर्ट की हैसियत से सहयोग साइट पर करते थे. तब प्रायः उप कार्यादेश से संबंधित मेरे कार्यालय की मीटिंग में भाग लेते थे और परामर्श देते थे. वादी ने मुझे अपना MOU का कागज और कार्य के देखभाल और उससे प्राप्त लाभांश के संबंध में बताया था. वादी ने बताया था कि बताया था ये तो कोई rest is all his opinion. Cross. प्रतिवादी को मैं BSL के कॉन्ट्रैक्टर इसलिए जानता हूँ. वादी से कॉन्ट्रैक्टर की हैसियत से जानता हूँ. वादी को कॉन्ट्रैक्टर हैसियत से जानता हूँ. वादी कॉन्ट्रैक्ट कब बने हैं इसकी कॉन्ट्रैक्टर कब बने इसकी जानकारी मुझे नहीं है. वादी कॉन्ट्रैक्टर के पहले क्या काम करते थे इसकी जानकारी नहीं. वादी द्वारा कुछ फर्म के पैसा बकाया लगाया गया जिसकी जानकारी मुझे नहीं है. उक्त MOU को बनाते वक्त मैं वहाँ पर उपस्थित नहीं था. मैं BSL से 30/6/2011 से सेवानिवृत्त हुआ हूँ. कार्य का मैं देखरेख 2007 से मेरे सेवानिवृत्त तक किया गया. मैं देखरेख 2007 से मेरे सेवानिवृत्त तक किया था. इसका मैं कागजी प्रमाण नहीं दे सकता. प्रोजेक्ट 2007 से मेरे सेवानिवृत्त साल तक चला है. उसके बाद क्या हुआ मुझे मालूम नहीं.
BSL के अंदर जाने के लिए गेट पास की आवश्यकता होती है। आगे बढ़िए। मुझे याद नहीं है कि गेट पास इशू हुआ था कि नहीं, मीटिंग की तारीख याद नहीं है। गेट पास इशू हुआ था याद नहीं, प्रोजेक्ट से संबंधित मीटिंग का तारीख नहीं बता सकता। मीटिंग मेरे कार्यालय स्टील में होता था। वादी ने मुझे ये कभी नहीं बताया, कभी ये मीटिंग होता था इनके कार्यालय में। मीटिंग का तारीख नहीं बता सकती। मीटिंग मेरे कार्यालय स्टील एंड पावर जोन में होता था। आगे बताइए। वादी ने मुझे यह कभी कभी नहीं बताया कि प्रतिवादी मेरे लाभांश का रकम नहीं दे रहे हैं। न कहते हैं मुझे रिटायरमेंट के बाद बताते हैं। उप मीटिंग से संबंधित कोई कागजात नहीं दे सकता हूँ। उप मीटिंग के उपस्थिति के संबंध में मैं कोई कागजात नहीं दे सकता हूँ। फॉर्म टेक्नो एक्सपो कहाँ से निबंधित है नहीं बता सकता हूँ। वादी ने इस प्रोजेक्ट से पहले और कार्य किया है या नहीं। BSL प्लांट के कर्मचारी थे। वादी BSL प्लांट के कर्मचारी थे, इसकी मुझे जानकारी है। वादी किस वर्ष में सेवानिवृत्त हुए नहीं जानता हूँ। ऐसी बात नहीं है The कि plaintiff was मैं also an employee of BSL. हाँ, he was an expert, he is an engineer. आगे बढ़िए। After his cessation of service, he started this business. ऐसी बात नहीं कि मैं एवं वादी दोनों BSL एम्प्लॉय थे, इसलिए छुट्टी। और PW3 मैं रामदेव सिंह सोनसो मुकदमे का वादी हूँ। मैं इस मुकदमे में अपना अर्जी दाखिल किया हूँ जो 11 पृष्ठों में है, जो दिनांक 28/4/12 को इस न्यायालय दाखिल किया गया, जिन सभी पृष्ठों पर मेरा और मेरे अधिवक्ता हस्ताक्षर है। और अर्जी में लिखी गई सारे तथ्य सही हो सकते हैं। इस बात के माध्यम से प्रतिवादीगण पर अपना बकाया राशि वसूलने हेतु इस मुकदमे को न्यायालय में दाखिल किया हूँ। अंकित तथ्यों का सारांश यह है, प्रतिवादी संख्या 1 मेरे पास प्रस्ताव लेकर आया और कहा कि BSL से एक टेंडर निकलने वाला है जिसमें आपको मेरे साथ मिलकर रेट तैयार करने पूरा टेक्निकल सहयोग करना है, तथा अनुरोध किया कि आप बिड में मेरे तरफ से पूर्ण रूप से कोऑर्डिनेट करेंगे, जिसके तहत बिड का पूरा कागज तैयार कर BSL में दाखिल करेंगे और प्रोजेक्ट से संबंधित सारे कागज दाखिल करेंगे। बैंक या किसी बात की BSL से मांगने पर स्पष्टीकरण करेंगे। बिड के बाद अगर प्रोजेक्ट का काम मेरे पक्ष में प्राप्त होता है तो काम पूरा होने तक आप इसमें सहयोगी होंगे। यह कि मैंने प्रतिवादी संख्या 1 के प्रस्ताव को स्वीकार किया और BSL द्वारा निर्गत टेंडर में पूर्ण टेक्निकल जानकारी के बाद देते हुए सहयोग किया। BSL द्वारा निर्गत टेंडर जो 1600 का है, उसकी टेंडर डॉक्यूमेंट लेकर मैंने बिड की तैयारी शुरू की और पूरी बिड तैयार कर प्रतिवादी संख्या 1 से डिस्कस करने के बाद BSL में जमा कर लायक तैयार कर दिया। फूड कॉन्ट्रैक्ट के टेंडर में टेक्निकल सहयोग करने के लिए प्रतिवादी संख्या 1 ने दिनांक 19/2/2007 को टेंडर संबंधित मेरे टेक्निकल सहयोग देने और हर तरह से सम्मिलित होने के लिए मुझे अधिकार पत्र दिया। पत्र DGM प्रोजेक्ट IC टेंडर एंड क्लेम्स के नाम निर्गत करते हुए उसकी एक कॉपी मुझे भी प्रेषित किया। यही वह मूल अधिकार पत्र है जिस पर मुझे उदय ब्रदर्स की तरफ से उदय भानु का दस्तखत है, जिसे मैं पहचानता हूँ ब्रदर्स को अंकित किया है। उपरोक्त टेंडर का कॉन्ट्रैक्ट प्राप्ति हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को मैंने पूरा सहयोग किया और फलस्वरूप प्रतिवादी संख्या 1 को वह कॉन्ट्रैक्ट BSL द्वारा निर्गत किया। मैंने उपरोक्त टेंडर प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से टेक्निकल सहयोग करके मैंने एक पत्र प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से DGM प्रोजेक्ट्स को लिखा था जो रिवाइज प्राइस बिड से संबंधित था, जिसे मैं मूल दाखिल किया हूँ। इस पत्र को मेरे कार्यालय में अंकित किया गया था, जिसमें मेरा दस्तखत प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से किया हुआ है, जिसे मैं पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श 3/2 अंकित किया गया। यह पत्र मेरे अर्जी का निश्चय 2 अंकित कर दर्शाया गया है। मैंने प्रतिवादी संख्या 1 को टेक्निकल सहयोग करते हुए प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से एक पत्र दिनांक 8/6/7 को भी प्रोफार्मा डिफेंडेंट BSL के डिप्टी GM IC टेंडर एंड क्लेम को लिखा, जो रिवाइज प्राइस बिड पर विचार करने हेतु अनुरोध से संबंधित है। यह मूल पत्र मेरे कार्यालय में अंकित किया गया, इस पर मेरा दस्तखत है, जिसे मैं पहचानता हूँ। इसे प्रदर्श अंकित किया जाए। मेरी अर्जी का निश्चय उपरोक्त अभिलेख से स्पष्ट है कि मैंने उदय ब्रदर्स को टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट में टेक्निकल सहयोग देने के लिए उदय ब्रदर्स की तरफ से अधिकृत था और जिसकी जानकारी BSL को भी थी। मेरे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच एक MOU दिनांक 11/9/2007 को बना, जिसके तहत मेरे टेक्निकल सहयोग के एवज में प्रतिवादी संख्या 1 को BSL से प्राप्त चेक की रकम का 15% मुझे भुगतान करना था। MOU में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया कि मुझे कॉन्ट्रैक्ट के प्रकार का सहयोग प्रतिवादी के हित में करना है। MOU मेरे वादपत्र के साथ संलग्न कर निश्चित 4 अंकित किया गया और मेरा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। इससे प्रदर्श 5/2 अंकित किया जाए। MOU कॉपी के द्वारा भी प्रमाणित MOU को 1600 के समक्ष तैयार किया गया। साक्षी के रूप में उन लोगों का हस्ताक्षर, जिसे मैं पहचानता हूँ। कॉन्ट्रैक्ट मैंने उपरोक्त अधिकार पत्र
व्यवहार मैं प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से BSL के साथ संपादित करते रहा, लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 BSL द्वारा निर्गत चेक अमाउंट को 12% मुझे भुगतान नहीं किया। 4 चेक विभिन्न अमाउंट का BSL से प्राप्त हो चुका है, जिसकी फोटो मैंने अपने अर्जी के साथ 5825D अंकित करते हुए दाखिल किया। तो चारों बिल को BSL के द्वारा भुगतान को BSL ने स्वीकार किया और चारों बिल को प्रदर्शित किया गया। मेरे द्वारा बार बार 15% प्राप्त चेक अमाउंट के भुगतान के संबंध में अनुरोध करने पर भी मेरे द्वारा लिखे गए पत्र का एक भी जवाब नहीं दिया गया। अंततोगत्वा मैंने कानूनी नोटिस भानु कुमार से 27/1/2009 भिजवाया, जिस पर भानु कुमार एडवोकेट का हस्ताक्षर है। मैं जानता हूँ प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया गया है, अतः इसे पहचान हेतु XY अंकित किया जाए। साथ ही प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा श्री SP धरन एडवोकेट के माध्यम से प्रति उत्तर भी भानु कुमार एडवोकेट को 19 फरवरी 2009 को भेजा गया, जिसे मैंने अपने वाद पत्र के साथ संलग्न कर फीचर 6 भी अंकित किया। प्रतिवादी संख्या 1 के वकील के माध्यम से भेजे गए मेरे नोटिस के प्रति उत्तर में साफ तौर पर पारा नंबर 3 में लिखा है कि प्रतिवादी संख्या 1 मुझे टेक्निकल सहयोग के लिए क्षतिपूर्ति करेगा और साथ ही मिलजुल कर मामला का निपटारा कर लिया जाएगा। प्रतिवादी संख्या 1 इस संबंध में केस फाइल करने के दिन तक कोई पहल नहीं किया। प्रतिवादी संख्या 1 के वकील श्री SP दर्द के माध्यम से मेरे नोटिस के प्रति उत्तर के पारा संख्या 1 में स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है। कानूनी नोटिस में दिए गए तथ्य पारा 1 से पारा 5 तक सर्वथा सत्य है। अतः स्पष्ट रूप से प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि MOU का वर्किंग एग्रीमेंट मेरे एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बीच 2 गवाहों की उपस्थिति में दस्तखत हुए और उन्हें दोनों गवाहों का हस्ताक्षर किए और उसे नोटरी पब्लिक द्वारा भी प्रमाणित किया गया। MOU का वर्किंग एग्रीमेंट में काम का स्कोप स्पष्ट किया गया है और दोनों पक्षों ने साथ साथ काम करने की पूरी सहमति जताई है। बिल्कुल कमर्शियल ऑफर प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा मदद ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर मेरे द्वारा तैयार किया गया, उसके BSL में इस भाषा और सहमति जमा किया गया। दोनों पक्ष एक साथ 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 काम करेंगे। दोनों पक्ष का उत्तरदायित्व भी सुनिश्चित किया गया है। यह स्पष्ट है कि मैं टेक्नो एक्सपो कोऑर्डिनेशन करूँगा, सभी तकनीकी जानकारी, डिज़ाइन और इंजीनियरिंग मुहैया कराऊंगा, फैब्रिकेशन, इन्वेक्शन एवं सिविल कार्य का सुपरविजन करूँगा। जबकि प्रतिवादी संख्या 1 सिविल एवं स्ट्रक्चरल के कार्य को निष्पादित करेगा। सारे पत्राचार करने, बिल बनाने, जमा करने, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग करने आदि की जिम्मेदारी मुझको दी गई थी, जिसका जिक्र ऑपरेशन पत्र में है। प्रतिवादी संख्या 1 के वकील के माध्यम से भेजे गए मेरे नोटिस के प्रति उत्तर पैराग्राफ में लिखा गया है कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड होने के पहले तक टेक्निकल अनुभव प्रदान किया और इसके बदले में प्रतिवादी द्वारा भुगतान किया जाएगा। 19/2/2009 तक यद्यपि कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूड नहीं हुआ था, पर करीब 80% कार्य संपन्न हो चुका था, जिसका भुगतान प्रतिवादी संख्या 1 को बोकारो स्टील प्लांट के द्वारा किया जा चुका था। इस स्वीकारोक्ति के बावजूद भी मुझे कोई भुगतान नहीं किया गया, जो सरासर गैरकानूनी है। प्रतिवादी संख्या 1 के वकील के माध्यम से भेजे गए प्रति उत्तर के पैरा 4 में जिक्र किया गया है कि मेरे द्वारा दिया गया टेक्निकल नो हाउ के बदले अक्रॉस द टेबल एम्बिग्यूटी सुलझा लिया जाए, किंतु इस पर प्रतिवादी संख्या 1 की तरफ से किसी तरह का पहल नहीं किया गया। इस विषय में मैंने पत्राचार भी किया। प्रतिवादी बेईमानी का नियम पे साड़ना चाहता है। प्रतिवादी संख्या को अपने भुगतान करने के संबंध में कई पत्र SP को से भेजे गए, उसके तरफ से कोई जवाब नहीं मिला। MOU का वर्किंग एग्रीमेंट के अनुसार जो भी जिम्मेदारी मेरी थी, मैंने उसको बड़ी निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक कार्यान्वित किया। निविदा जमा करने से लेकर मुख्य कार्य संपन्न होने तक पूरी तकनीकी जानकारी प्रदान किया। ड्राइंग जो BSL में उपलब्ध थी तो निकाल कर सूचीबद्ध कर प्रतिवादी संख्या 1 को सुपुर्द किया था। दैट वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट एडिशन व्हिच आई वाज ट्राइंग टू प्रोड्यूस टू। स्ट्रक्चरल के डिज़ाइन एवं ड्राइंग के लिए रांची से पूर्व जानकारी वाली पार्टी को आउटसोर्स कर काम कराया और उनको सारा भुगतान मेरे This is द्वारा in किया। paragraph number, let me just mark it. 21 Para 21 20. साइड लेकिन भुगतान का भी कोई डॉक्यूमेंट, कोई प्रूफ, कुछ नहीं। Rather, you have said in your cross examination कि चेक से किया है, चेक का कोई डिटेल नहीं है, कोई बैंक डॉक्यूमेंट नहीं है। उनका उस कंपनी का कोई विटनेस नहीं है। उन्होंने ऐसा कराया। डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क के लिए उदय ब्रदर्स द्वारा निर्मित चेक मैन्युअल नहीं है, चेक एग्जीबिटेड नहीं है। सारा काम जैसे सर्विस नहीं
सर्विसेज लाइनों का डाइवर्शन, सिविल वर्क का निष्पादन, स्ट्रक्चरल का फैब्रिकेशन, कनेक्शन आदि सभी काम मेरे अभियंता मंदाता से BSNL के DGM, BSL के DGM पोस्ट से रिटायर्ड है। कल मेरी कंपनी में कार्य थे, देख रहे हो गार्डियन संपन्न है। प्रतिवादी संख्या एक ने मेरे तकनीकी जानकारी, मेरे कार्य अनुभव से पद का पूरा फायदा उठाया। जब भुगतान करने की बात आई तो पहले टाल मटोल करते रहे, बाद में सामने कर रहे। प्रतिवादी संख्या एक अपने प्रत्युत्तर में गलत कहा गया है कि मैंने स्टील खरीदने के लिए फंड की व्यवस्था नहीं किया है। MOU के पैरा 6 के अनुसार यह है कि इमरजेंसी व्यवस्था थी और स्टील खरीदने के लिए जब इन्वेस्टमेंट्स हाई होगी तो अर्जेंसी मीट करने के लिए मैं फंड की व्यवस्था करूँगा। इसकी सारी व्यवस्था एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रतिवादी संख्या की थी, परंतु कभी ऐसी इमरजेंसी की स्थिति पैदा ही नहीं हुई जहाँ स्टील खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा और मुझे फंड की व्यवस्था करनी पड़ी। प्रतिवादी संख्या एक ने भी किसी स्टेज में किसी माध्यम से मुझे सूचित भी नहीं किया कि फंड की इमरजेंसी है, मुझे उसकी व्यवस्था करनी चाहिए। MOU का पैरा 7 में यह भी व्यवस्था थी कि अगर मैं किसी तरह की इन्वेस्टमेंट करूँ तो उसे प्रतिवादी संख्या के द्वारा रिइम्बर्स कर दिया जाएगा। चूँकि फंड इन्वेस्टमेंट की कोई अर्जेंट सिचुएशन आई ही नहीं, तो मैंने रिइम्बर्समेंट की कोई बात भी नहीं की। वैसे इस प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट दिनांक 26/3/2008 को हुआ और लगातार 3 बिल का भुगतान BSL के द्वारा तारीख हुआ, यानी एग्रीमेंट के 4 महीने से 6 महीने के भीतर करीब एग्रीमेंट वैल्यू का 55% पैसा प्रतिवादी संख्या एक से प्राप्त हो गया और जनवरी 1/2009 में चौथी किस्त की भुगतान हो गई, यानी कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के 9 महीने के अंदर मेरे सहयोग से 80% भुगतान मिल गई। स्टील खरीदने के लिए फंड का प्रॉब्लम या इमरजेंसी सिचुएशन आने की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही प्रतिवादी संख्या एक के वकील का पत्र भी जिक्र है कि स्टील खरीदने के लिए 1.2 करोड़ का खर्च आया, जबकि भुगतान 2.4 करोड़ से ज़्यादा का हो गया था। अति इमरजेंसी या अर्जेंसी की कोई स्थिति पैदा नहीं हुई, मुझे फंड की वैकल्पिक व्यवस्था करने की जरूरत ही नहीं आई। कार्य की देखभाल करने के साथ साथ MOU की शर्तों के अनुसार बिल बनाकर BSNL में जमा करना और भुगतान करने का काम भी मैंने किया। चारों बिल के भुगतान के बाद बिल फॉरवर्डिंग मेमो और एडजस्टमेंट स्लिप जमा किया, जो प्रोजेक्ट फाइनेंस और अकाउंट्स डिपार्टमेंट से मैंने प्राप्त किया। ऐसी दस्तावेज सिर्फ संबंधित एवं अधिकृत व्यक्ति को ही BSL का प्रोजेक्ट फाइनेंस और अकाउंट देती है। अतः भुगतान की बिल बनाने एवं भुगतान कराने में मैंने भरपूर सहयोग एवं अहम भूमिका निभाई, परंतु प्रतिवादी संख्या एक अपनी बदनीयती के चलते मेरा भुगतान नहीं किया और मुझे न्यायालय में शामिल नहीं किया। निविदा बनाने, BSL में जमा करने, BSL से प्रचार करने इसके इनके एविडेंस में कहीं ये नहीं आ रहा है कि हमको टर्मिनेशन नोटिस नहीं है। प्रतिवादी संख्या एक ने दिनांक 20/6/2011 के द्वारा किसी अंतिम पत्र का जिक्र करते हुए अंतिम पत्र टर्मिनेशन लेटर बोल, किसी अंतिम लास्ट लेटर उन्होंने कहा था प्रीवियस अंतिम लेटर पत्र इज समथिंग एल्स एंड टर्मिनेशन लेटर इज समथिंग एल्स। किसी यू आगे आर रीडिंग पैरा नंबर अंतिम पत्र का पैरा 24 20 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन। प्रतिवादी संख्या ने दिनांक 20/6/2011 के द्वारा किसी अंतिम पत्र का Yes. जिक्र करते हुए MOU को टर्मिनेट करने की बात कही। सच्चाई यह है कि इस पत्र के पहले प्रतिवादी संख्या एक की ना कोई पत्र आई और ना ही उसने उस पत्र को कोई रेफरेंस या डेट दिया। अतः ऐसा कहना बिल्कुल गलत और गैरकानूनी है। वैसे भी MOU में टर्मिनेशन को प्रावधान है ही नहीं। MOU का पैरा 11 में स्पष्ट है कि इस तरह डिफरेंस होने से दोनों पक्षपात के सुलझा लेंगे, नहीं सुलझता है तो स्थानीय कोर्ट हाई कोर्ट ले जाएंगे। तदनुसार प्रतिवादी संख्या के द्वारा मेरा पैसा देने से मुकरने के बाद मैं परमानेंट लोक अदालत में गया, केस दायर किया। this person was working This as- person, this particular person, he is the Yes. proprietor. he is the proprietor. मैं शिव दुर्गा पारा माउंट, ये है क्या अपीलांट कहाँ दे रहे हो? शिव दुर्गा टेक्निक्स पैरा 78 मैं शिव दुर्गा पैरामाउंट में चीफ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉई के पद में कार्य करता था। पैरा 78 मुझे जानकारी नहीं है कि शिव दुर्गा पैरामाउंट हम इंडस्ट्री किसी और जगह भी काम किए थे और उसका परफॉर्मेंस कुछ ठीक नहीं रहा था, जिसके भी आप में हम काम किए थे। दैट इज नहीं आगे पढ़िए ना, थोड़ा सा ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। मैं शिव दुर्गा पैरामाउंट इंडस्ट्री की तरफ से टेंडर के लिए अप्लाई किया था, किंतु काम नहीं मिला। मैं हाँ, शिव उसके दुर्गा बाद 79 पैरामाउंट में चीफ एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय के पद में काम करता था। हाँ, मुझे कभी ऐसे नहीं- जानकारी नहीं है कि शिव दुर्गा पैरामाउंट इंडस्ट्री के द्वारा झूठा अनुभव प्रमाण पत्र देने के कारण कार्य नहीं मिला। मुझे इस वर्क ऑर्डर के लिए ये वो तो BSL सेपरेट द्वारा हो गया है। यहाँ तक जो हुजूर ने पढ़ा that those 3 paragraphs are with regard to my association with a party which has a bad history. Okay.
एंड पैरा 83 उपरोक्त टेंडर के लिए बीएसएन ने मुझे उदय ब्रदर्स का प्राधिकृत व्यक्ति के रूप में पहचान देने से कोई पत्र निर्मित नहीं किया। बीएसएनएल ने कुछ नहीं किया, उदय ब्रदर्स ने किया था शुरू में। नहीं, और ये मेजरमेंट बुक में भी इनका कोई साइन नहीं। There is no signature in the measurement book. And he has said that he had no authority to sign the measurement book. Para 81 says that I obtained a drawing and submitted. Para 65, डिजाइन का कार्य स्ट्रक मेक इंजीनियरिंग मेकॉन बाटिक सिंह द्वारा बनाया गया था। स्ट्रक मेक इंजीनियरिंग को डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क के लिए भुगतान किया। किसने किया? स्ट्रक मेक इंजीनियरिंग को डिजाइन एवं इंजीनियरिंग वर्क के लिए उदय ब्रदर्स द्वारा निर्मित चेक मैन्युअल। So he was only rendering his services, and therefore he is honestly and fairly disclosed all the facts. उसने नहीं किया, नहीं किया। No, but when you say that it was paid by check, तो उसका तो बैंक स्टेटमेंट, चेक का डिटेल कुछ तो होना चाहिए ना। ये तो आपके पोजीशन में था, उदय ब्रदर्स ने दिया। इसका पेमेंट पेयर है उदय ब्रदर्स। हाँ। हम सिर्फ हैंडओवर कर रहे हैं, और पैरा 81 के हिसाब से हम उसके अगेंस्ट में, जिसके लिए कंसिडरेशन था, उसके अगेंस्ट में जो ड्राइंग था वो स्ट्रक में से हम ऑब्टेन किए उदय ब्रदर्स को। उदय ब्रदर्स ने उनको चेक दिया। उदय ब्रदर्स का पैसा खर्च हुआ उसमें। उदय ब्रदर्स का पैसा था। Who is defendant number 1? अगर उसका पैसा हम दिए होते ना तो फिर रिइंबर्समेंट का क्लेम। नहीं, अगर मान लीजिए उदय ब्रदर्स ने पैसा दिया तो the services were directly rendered to उदय ब्रदर्स। तो I submitted that check and I obtained the drawing. No. स्ट्रक मेक इंजीनियरिंग को डिजाइन एंड इंजीनियरिंग वर्क के लिए उदय ब्रदर्स द्वारा निर्मित चेक मैंने उन्हें दिया। मतलब उदय ब्रदर्स ने आपको दिया और आपने दिया, लेकिन चेक डायरेक्टली पेमेंट हुआ उदय ब्रदर्स। मतलब उदय ब्रदर्स के लिए मैंने, मतलब उदय ब्रदर्स के लिए मैंने जुगाड़ किया इस चीज का, पैसा उन्होंने दिया। नहीं, पैसा जुगाड़ नहीं है, पैसा जुगाड़ ऐसा नहीं है। पैसा अगर नहीं, आपने ड्राइंग का जुगाड़। जस्ट अ मोमेंट, you were giving the technical know-how, the drawing etc. were also being provided by you, correct? And you were also incurring certain expenses, and your case is that StructMech engineering के द्वारा design बनाया गया, right? And you had engaged StructMech engineering for preparing the drawing, but the amount was directly paid by Uday Brothers. Yes. And you have not received this amount by way of any reimbursement. I concede. I'm saying that had I paid, then I would have made a claim for reimbursement from Uday Brothers, which I have not. Contract said that you will be reimbursed if you make any expenses. That means the contract acknowledges that apart from incurring expenses, also I'm doing something. That 15% is confined to that doing something, and reimbursement expenses will be on the pocket of Uday Brothers for whom I'm तो doing. भाई उदय ब्रदर्स ने जो काम किया उसका पैसा उसको मिल गया। नहीं, दिस स्ट्रक्चर मेक ने जो काम किया उसको पैसा उसको मिल गया। तो इसके अगेंस्ट आपको कोई क्लेम नहीं। आपका इतना ही प्रूव ये होता तो हम है। सिर्फ दिखाने के लिए करें कि हम क्या कर रहे थे। नहीं, दैट्स राइट, बट दैट वाज पेड। व्हाटएवर डिजाइन बनाया पेमेंट हो गया। उसके तो बाद ऐसा नहीं है कि वो मेरे पॉकेट से खर्च हुआ और हमको नहीं मिला। उसके बाद आप क्या काम किए? What work you have done? Who were the persons engaged in executing the work? Who were the persons who were inspecting and entering into the premises? इसका कोई एविडेंस नहीं। All assertions by me. कोई एविडेंस नहीं। क्या है काम? At this juncture, I know, but you know we are just looking at the I'm so obliged to your ladyship. Ladyship is कि हम लोग giving क्या देख रहे हैं इसको। आप बताइए। That is all. थोड़ा इसको पार्टेड कर देते, थोड़ा सा अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कुछ और असिस्ट कर लेते। ठीक है, कोई बात नहीं, इतना हम कर देंगे। जी। लेकिन बीच में कुछ पिटीशन मत खाइए। नहीं करेंगे। That please don't. नहीं करेंगे, हम करेंगे तो आप लेडीशिप कैन ऑलवेज रीच
reject नहीं, it. ये I कोई will मतलब not do नहीं that. नहीं, देखिए ये कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम आपको टाइम देते हैं। प्लीज भी जो है आप एक तो नया पिटीशन फाइल करें। दिस आई विल नॉट परमिट। आई एम मेकिंग इट वेरी वेरी क्लियर। इफ यू वांट टाइम फॉर समथिंग एल्स टू असिस्ट बेटर, इट इज ओके, बट नो फाइलिंग ऑफ एनी। जो आपने फाइल किया है वो हम देख रहे हैं, मेरे पास है जो डॉक्यूमेंट आपने फाइल किया है हम देख रहे हैं। योर जो भी है we will that we are bound to consider। आइए डिस्पोजल करके हमको रिमांड ऑर्डर नहीं चाहिए because आइए has to be disposed of। I will take care of that। I will see whether I actually need this। structure make engineering का इस document का कोई relevance नहीं। It has come in evidence that you have taken work and the payment was made by No, but they are denying the- everything. No, they are also denying that I have done it. I have taken whatever role I claim to have played. They are denying all that. but They even denied the but MOU. your evidence While admitting the MOU in one paragraph, they deny the same MOU in another paragraph. they say that MOU Everything. was entered anyways। हाँ क्या बोलना है आपको आप Well, They say there was an agreement but not a contract because the consent was. no, it was misread. That's what the consent was not free consent. In legal terms, if we say. yes Manas, we have 4 points. Manas. Our first point is with respect to limitation. Manas, the suit which was filed was barred by limitation. Since admittedly, Manas, the suit has been filed after 3 years from the date of cause of action. Manas. The second point. just a moment what was the earliest course of action Manas, it is admitted in the plaint itself. 2011 that's it 2009. Manas. Manas, the clause under clause 7 of the MOU which they are relying for payment said 15% has to be paid immediately once the payment is made by BSL. So Manas, the BSL made payments in the year 2008, 3 payments, and last payment was made on January 2009. so each bill will have a separate cause of Separate action cause of action. Now, Manas, as far as the first 3 separate bills, cause of action separate. last bill Last payment by is BSL dated is dated 1st January 2009. 1/1/2009 Now, should I give all the 4 dates? Manas? yes First is 13th August 2008. yes Then is 22nd August 2008. Then is 22nd October 2008. And then it is 1st January 2009. So, Manas, the time period of 3 years for money recovery Manas, would start from immediately after these dates. So, Manas, as far as Manas, the suit was filed on Manas, it's April 28th April 2012. So, Manas, 3 years from the year 2008 all expired by 2011 Manas. And as far as the last date also 1st 2009, this time also expired on 31st December 2011. the limitation will start from the date of the bill or it will start from the date of refusal or it will start from the time period prescribed for payment Manas, it would start from the date it accrued. According to them, it was supposed to be paid immediately once it was paid by BSL. So these dates are the dates of payment by BSL. Clause 7 of the MOU says these so. are the dates of payment by BSL BSL. And that is what Manas, they have even admitted in their plaint. At payment that- by BSL Payment by BSL. and what is the date of raising the bills bills raised on are dated Manas, the bills are 10/11/2008. then
then matlab 5/12/2008 Yes. and 20th January 2009. There are 4 bills. There are 4 bills. Where's the 4th one? The 4th one is 30th April 2009. Though matlab none of these 4 bills have been proved. None of these 4 bills. They must have been exhibited. Not executed. There is a clear finding matlab at internal page 29 of the These judgment. bills have not been exhibited. Not been executed. My bills Not are proved. Not proved at all. That is what matlab the learned court matlab says that the plaintiff has at page 29 of the judgment, internal page 29, the plaintiff has failed to prove any of the invoices as mentioned in the claim. matlab para 39 तो of their claim. photocopy भी नहीं produce किया कुछ नहीं. बिल दे दिए थे Hmm? तो बिल दे दिए थे आपके पास You can't improve it. we have banked upon the refusal that has come in June 2011. Now, para 39 of their claim, they have categorically admitted at last 4 lines, though the principal defendant should have paid rupees 30,72,000, 15% of the total payment received by the principal defendant from sale till January 2009. By the time all payment against all 4 running bills were received by the principal defendant. So they admit that they ought to have been paid by January 2009. So the time would run from January 2009. And it will expire either in December 2011 or January 2012. But the present suit has been filed in 28 April 2012, which is beyond 3 years. In fact, the Schedule A, which my learned friend relied, even the Schedule A shows delay of more than 3 years. While they are calculating, That's fine. so on the point of limitation, in our humble submission, this suit is barred by limitation. The finding of the learned court below are starting from page number 29. Para number. Para number 17, Roman 1 onwards. Internal page 29. If I may be The very permitted, first there are issue. 3-4 paragraphs and That's states. No, we'll see that. We'll see that. Then further on, this is first point. This is Limited. first point. Second point. That is barred by limitation. Our second point is that these 4 invoices have never been proved. Our third point is that the MOU itself was terminated on 11/9/2007, which is on 15/10/2007, which is just 1 month after the alleged MOU. How have you proved this? Exhibit B, Any proof of service? Your evidence? Who has exhibited this? DW2 has exhibited. Mr. P. Rajagopal.
Should I place DW2. DW P Raj Gopal? The chief is in Hindi. Yes. Where is that statement? Para 5. This is 11:9. We want to see 15:10. 15:10. Yes. Now it's para 7. Should I place para 7? Yes. यह कि वादी कंपनी ने इकरारनामा दिनांक 11/9/2007 की शर्तों के अनुसार एक भी काम नहीं किया और न ही आवश्यक फंड की व्यवस्था की, जिससे प्रतिवादी संख्या 1 ने इकरारनामा दिनांक 11/9/2007 को रद्द कर उपरोक्त टेंडर को स्वयं अपने शर्तों से पूरा किया। प्रतिवादी संख्या ने इकरारनामा दिनांक 11/9/2007 को रद्द करने संबंधित पत्र दिनांक 15/10/2007 की मूल कार्यालय प्रति, जिसे वादी के तत्कालीन कर्मचारी श्री पी.के. मिश्रा ने दिनांक 16/10/2007 को वादी की ओर से प्राप्त किया था, माननीय न्यायालय में दाखिल किया है, जिस पर वादी संख्या 1 एक मूल कार्यालय प्रति, जिसे वादी के तत्कालीन कर्मचारी पी.के. मिश्रा, somebody had received it. You are exhibiting the receipt. receipt. Plaintiff's employee or some employee. It is this particular signature has been exhibited. B.K. Mishra. Without a statement that he identifies the signature of that. Only B.K. Mishra could No, have this Yes, signature. let me please. माननीय न्यायालय में दाखिल किया है, जिस पर वादी संख्या 1 पी.के. उदय भानु एवं श्री बी.के. मिश्रा का हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानता हूँ। He says, he identifies the signature. वादी संख्या 1 पी.के. उदय भानु एवं बी.के. मिश्रा का हस्ताक्षर है, जिसे मैं पहचानती हूँ। मतलब प्लेंटिफ का भी हस्ताक्षर है उसमें। मतलब it should have been प्रतिवादी. अच्छा। Say P.K. Uday Bhanu is the owner of the defendant firm. प्रतिवादी। Should have been. भानु प्रसाद, उदय भानु, एवं जिसे मैं पहचानता हूँ। जिसे मैं पहचानता हूँ. So he identifies signature of Mr. P.K. Mishra. यह कि इकरारनामा निरस्तीकरण की सूचना देने के पश्चात भी प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी कंपनी को दिनांक 20/6/2011 के 2 पत्रों द्वारा इकरारनामा निरस्तीकरण एवं वादी कंपनी द्वारा कार्य नहीं करने के आधार पर कोई पैसा नहीं देने की बात कही। प्रतिवादी संख्या 1 ने 2 पत्रांक दिनांक 20/6/2011 की मूल कार्यालय प्रति तथा रजिस्ट्री रसीद संख्या दोनों दिनांक 20/6/2011 की मूल प्रति मान्य न्यायालय में दाखिल किया है, जिसे मैं पहचानता हूँ। यह कि प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी के विधिक नोटिस दिनांक 27/7/2012 के जवाब में अपने अधिवक्ता श्री विश्वनाथ शर्मा के द्वारा दिनांक 16/8/11 को जवाब भेजा। प्रतिवादी संख्या 1 ने विधिक नोटिस दिनांक 27/7/2011 की मूल प्रति तथा जवाब दिनांक 16/8/2011 की मूल कार्यालय प्रति तथा रसीद संख्या दिनांक 16/8/11 को मूल प्रति मान्य न्यायालय में दाखिल किया है, जिसे मैं पहचानता हूँ। यह कि वादी कंपनी ने प्रतिवादी कंपनी से इकरारनामा को बिना उसके तथ्यों की जानकारी दिए विश्वास में लेकर हस्ताक्षर ले लिया। यह इस तथ्य से स्पष्ट है कि तय सरकारी पब्लिक सेक्टर यूनिट के
मापदंडों के अनुसार किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में लाभ राशि 10 से 15% ही होती है, जबकि वादी ने बिना प्रतिवादी संख्या 1 के जानकारी के 15% लाभांश का हिस्सेदार अपने आप को लिख दिया, जबकि संपूर्ण आर्थिक एवं यंत्र निवेश व सारे टैक्स का भुगतान प्रतिवादी कंपनी द्वारा किया गया। यह कि आर.डी. सिंह ने एक अन्य कंपनी शिफ्ट दुर्गा पैरामाउंट इंडस्ट्री की ओर से बोकारो इस्पात संयंत्र में जाली बिल सौंपने को लेकर बोकारो इस्पात संयंत्र ने शिफ्ट दुर्गा पैरामाउंट इंडस्ट्री को बोकारो इस्पात संयंत्र में किसी भी ठेके में भाग लेने से प्रतिबंधित कर दिया। So basically, our allegation is that this contract was terminated, and he did not perform the works. So I would place the scope of work under the concerned MOU, the work which he was supposed to perform, except one document from Struckmec Engineers, which learned friend has been relying on. They have not been able to show any piece of work which has been done by them. And even for Struckmec Engineers, the services which they are trying to prove is basically a courier service, that we have taken the check from defendant number 1 company and we have given it to Struckmec. The details of payment to Struckmec by defendant number 1 has been given in paragraph number 6 of this defendant, the defendant witness, GW2. He has given the check number and the payment made directly to Struckmec. All payments have been made by us. We have directly paid to Struckmec. So, and if the MOU is seen, they are claiming 15% of the total contract value. So they have to render some substantial underlying works. And what they have been trying to show that yes, what we did is only we took money from defendant number 1 company and we handed over the check to Struckmec. And for this work, they are claiming 15% of the total contract value. Apart from that, they have failed to prove any of the work which they were required to render under the MOU. What was the nature of work which they were required to render? I may place the MOU. Have you stated in your evidence that they did not perform any work? Indeed, that is Which one. paragraph was that? In the evidence, I just refer to that in particular. in the evidence, I just Yes, it just refer to the paragraph of the DW. I just missed it out. I need to mark it. ना ही आवश्यक फंड की व्यवस्था करनी, काम नहीं किया, व्यवस्था भी नहीं किया। ठीक है, और क्या है? Now, scope of work I was placing under the MOU. If your readership can have the MOU on Yes, para I 3, have MOU. Para 3. para 3, 5. Then again 5 and 6 they specify the works to be performed. May I please? Yes. That the second party shall arrange design and engineering for the project and provide all technical supervision in the area of fabrication and erection of structural items and civil execution work as per mutual understanding. The next obligation is of the first party. I am not referring to it. Para 5, that the second party shall be responsible for all the coordination work, correspondences, preparation and submission of bills, project monitoring and progressing. See, I have seen para number 3 at page number 2 of the MOU, and then you are reading 5. Fourth party. 4 is for the first party. 4, the third party. 4 is for the third party. 4 is for the first party.
मतलब I am reading MOU dated 11 September 2007. Just one, there is some. Yeah, oh sorry. The third one, then fifth one, right? There are two files. Para 5, there are two para 5s. That's right. Okay. So the first para 5 says that the second party shall be responsible for all the coordination work, correspondences, preparations, and submission of bills, project monitoring and progressing, and arrangement of drawings. That second paragraph, that the second party shall arrange supply of bought items, plant, equipments, components from domestic sources at the most economical rates on behalf of the first party. 6. That the second party time to time shall make arrangement for fund some time when the investment will be high for procurement of steel for structural work. In case of urgency, basically the first party shall make the financial arrangement. So that's all these works which are referred in para 3, first para 5 and second para 5 and para 6. No proof have been filed by the plaintiff. In fact, these works have not even been alleged to have been performed in the play. These specific works. That should be sufficient. That is sufficient. अब बताइए क्या करना है? Impugn order पढ़ना है? Impugn order पढ़ना है? नहीं बिल्कुल नोट करने की जरूरत नहीं That's all. है रिप्लाई में सबमिशन करेंगे इमीडिएट कल कमिंग वेडनेसडे 19 नहीं जाएंगे. नहीं मैं अपने मेमोरी को इतना ट्रस्ट नहीं करती. सुनिए आप कंप्लीट सुनिए. आर्गुमेंट्स कंक्लूड कर लेते हैं. अगर आपको कुछ ऐसा ठीक नहीं है. आप बताइए आप कुछ रिस्पॉन्ड में क्या बोलना है? सारा एविडेंस पढ़ लिया, प्लेन रिटन स्टेटमेंट पढ़ लिया. कल रख दिया The arguments on behalf of the appellant is concluded. The counsel for the respondent has also concluded his argument. The matter is directed to be posted tomorrow at the request of the learned counsel for the appellant for his rejoinder. रिप्लाई कुछ पार्ट डिक्टेशन फर्स्ट हाफ में. कोई टाइम देना है तो बता दीजिए. कोई टाइम आपको स्पेसिफिक चाहिए तो बता दीजिए. You tell us you want any particular time or you can start at 10:30. हाँ देख के बताइए, है ना. कंफ्यूजन में मत रहिए कि फिर ये आप नहीं है और वो नहीं है ना. देख के बताइए. Orders with effect from supplementary list item 2. First appeal file number 8069 of 2024. Yes, appellant. State. How much is the delay? 2 years 9 months. Yes. You want to file a response to this IA? Or it should be condoned? Oh, notice देना पड़ेगा. Only the state is there. Yes? You tell us. आपको समझ नहीं आ रही बात? Yes. Orders with defect are ignoring the defect. नहीं, ignoring के लिए नहीं आया. Limitation के लिए आया है. Limitation expired. Time barred. आइए तो फाइल हो गया.
limitation petition. Plaintiff number 2, 5 and 8 and 11 does not find this. Limitation के बाद भी defect. Nobody appears on behalf of the applicant. The counsel for the state is present. As per the office note, the petition is still defective, and however, a petition seeking confirmation of legal has been filed. Time till third of March is granted to the appellant to remove the surviving defects plaintiff. If the defects are removed within time, post this case on 5th of March. Okay. Let this a soft copy of this order be communicated to Ms. Vandana Singh, the advocate on record on behalf of the appellant. Item 3, first appeal filing number 8903 of 2024. I filed आइए क्या चीज़ के लिए for फाइल की? extension of time. हाँ? 4 weeks time में preemptive order हुआ था coordinate bench में paragraph 4 में start हुआ. Please pointed out that not filed the MR, but the appellant applied for certified copy on How much time do you need? Up to 5th of February to remove the defects. तो खत्म हो गया टाइम. extension चाहते हैं through IA हम फाइल किए. आइए 1207 हाँ, उसमें कब तक का एक्सटेंशन चाहिए? 4 weeks time पर. आप देखिए ना आप क्या लिखे हैं पैरा 5 लास्ट पेज पे देखिए. Up to remove the defects 4 week from what date? 29/1. 1. आपने 29/1 को किया ना ये फाइल और आपने 4 weeks का टाइम मांगा. पैराग्राफ 5 ये पिटीशन आपने कब फाइल किया? 29/1 को. तो हाल में फाइल हुआ जो इसके अलावा भी कोई पिटीशन फाइल हुआ है? आइए नंबर Annexure 1 में आइए नंबर बताइए. Annexure 1 में रिसीट आइए नंबर 1207. 1207. 12/7/2025 12/7 कब फाइल किए? 25 को फाइल हुआ. 29/1/25 को हाँ, है ना. उस दिन आप 4 हफ्ता का टाइम उस दिन चाहिए था. नहीं 5 हफ्ते का 4 हफ्ते का टाइम दिया था कोऑर्डिनेटर बेंच. बट माने डिफेक्ट इज दैट द सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द award has not been signed. I applied for certified copy on कहाँ लिखी है? Award has not been 39 signed. to 24. Annexure 1, you kindly see. At page 7. मिला ही नहीं हम ऑफिस से दिया ही नहीं. और क्या, इसीलिए 4 weeks more time मैं भी दे.
कि फाइलिंग नंबर FA/8903 of 2024 with IA number 1207 of 2025. The learned counsel for the applicant has submitted that he has applied for certified copy of the award dated 28/6/2024 before the learned civil judge (civil division close 10 Roman 10 E. Simon Benjamin Turkey, passed in LA number 1 of 2007, but the same has not yet been received. On account of which the appellant is unable to remove the reports. Considering the aforesaid submissions, let the report be called for from the concerned court as to why a copy of the report, certified copy of the award is not being provided to the appellant. The office is directed to forward a copy of the IE number 1207 of 2025 to the concerned court. इसमें soft copy लिखेंगे along with the copy of this order. Let this order be committed to 3 times. Post this case on 19th of March. 19th March. रिपोर्ट आ जाएगा क्यों नहीं हो रहा है? आपका आइए भी भेज देने का। तो बताएगा चेक करके क्यों नहीं दे रहा है। जहाँ तक हमको लगता है अवार्ड नहीं बनता है, ये लोग नील अवार्ड भी नहीं बनाते, नहीं बना होगा। आएगा रिपोर्ट, नहीं बनेगा तो बात खत्म हो जाएगा। एक आध केस में आया है नील अवार्ड नहीं बनाते, डिसमिस किया ना आपका केस, नील अवार्ड नहीं बनाते। Item 4, first appeal filing number 9161 of 2024. 10:30 अदर साइड को खबर कर देंगे, बोल दिए ठीक है। 10:30 बजे टू बी टेकन अप एट 10:30 एज फर्स्ट केस। इनका जो पहला वाला मैटर है फर्स्ट अपील वाला। जो इसमें हम एप्रोप्रिएट आईए पिटीशन फाइल करेंगे 1,86,000 कोर्ट फी का है, हमको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाया, इसलिए आईए में फाइल कर रखा है। क्या किसका नोटिफिकेशन नहीं मिला? 2019 में जो कोर्ट फी बढ़ा है, हाँ इसमें 1,86,000 कोर्ट फी है। हाँ I will file the I will explain lordship. 1,86,000 is not required to be paid lordship. Why? ये सूट कब का है? सूट कब का है? 2022 का। जी और notification 2019 का नोटिफिकेशन है। I will explain lordship in my I pray क्या एक्सप्लेन करेंगे? आपको बताइए भाई, कोर्ट फीस में आप क्या एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, इसमें एक नोटिफिकेशन है जो उसको थोड़ा सा देख लेना चाहते हैं। सूट में कितना पेमेंट किए थे कोर्ट फीस का? सूट में कम पेमेंट किए थे, थोड़ा सा हम फाइल नहीं देख पाए हैं। सूट वैल्यूड एट ₹80 lakhs, ठीक है? नहीं, डिग्री देखा जाए हुजूर, सूट का उसमें कम हम कोर्ट फी दिए हैं। सूट का डिग्री देखा कहाँ है? डिग्री में कम है, जो डिग्री में हम लोग रहता है वही हम लोग कोर्ट फी देते हैं। कहाँ लिखा है कोर्ट फी डिग्री? नहीं, डिग्री में रहता है, कोर्ट फी दिया रहता है। हाँ बताइए, पढ़ के बताइए कहाँ? हम देख के देखो, फाइल मेरा फाइल छूट गया है, हम देख के बता देते हैं। बताइए, आप फाइल भी छोड़ के चले हैं। छूट गया है, आई एम सॉरी। शायद लास्ट सूट का वैल्यूएशन है 80 lakhs रुपीस। नहीं, वैल्यूएशन से नहीं है, जो डिग्री में हम लोग को लिखा रहता है वही कोर्ट फी देते हैं हम लोग। दिखाइए, डिग्री पढ़ के बताइए कहाँ लिखा है कि कितना कोर्ट फीस आप पढ़ेंगे। अब तो एड वैलोरम हो गया ना यहाँ। नहीं, अरे भाई यहाँ आप एड वैलोरम हो गया, 50,000 का कैप खत्म हो गया।
नहीं ऐसा तो नहीं है, हम देख के बता दें। नहीं है कैसे? हाँ, 50,000 रुपये कोर्ट फी दिए नीचे कोर्ट में। पर वो मैक्सिमम कोर्ट फीस का वो खत्म हो गया चार वही तो। नहीं तो यहाँ जो हम लोग दिए हैं उसी को हमको देना है। यहाँ हम जो दिए हैं उसी के हिसाब से हमको देना है। अगर वहाँ पे ठीक से नहीं पॉइंट आउट किया तो उसका आपका नहीं उसमें तो 50,000 ही था। उस समय नहीं था हम 50,000। इसीलिए नोट टुडे चाह रहे थे। आप बोलते 2019 का नोटिफिकेशन है। आई एम नॉट वेरी मच श्योर, मेरे पास कॉपी नहीं है, इसीलिए हम इसको एक्सप्लेन करना आपका चाहते हम हैं। कॉपी प्रोवाइड करते हैं। हम एक्सप्लेन नहीं कर अभी देंगे। प्रोवाइड करते लाइक उनको बुलाइए स्टाफ रिपोर्ट करते बोलिए कि किस नोटिफिकेशन के आधार पर पहले 50,000 मैक्सिमम कोर्ट फीस था, किस नोटिफिकेशन के आधार पर इन लोगों ने ये कोर्ट फीस का डिफेक्ट निकाला। नीचे कोर्ट में हम लोग 50,000 आपको सब चीज प्रोवाइड करते हैं, आप एकदम चिंता ही नहीं करें। वी आर हियर टू असिस्ट यू। आई विल असिस्ट यू। नहीं आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो क्या ही हम करें बताइए। जो चीजें उपलब्ध होनी चाहिए नेट पर या तो आप खोजते नहीं है या मिलता नहीं। आपको नोटिफिकेशन सही में प्रोवाइड करें। नहीं हम तो कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, हम आपको अभी प्रोवाइड, कोशिश का जरूरत ही नहीं है। बुलाइए जरा, आप आ जाइए। कभी आप तो यही है, हाँ, आपको प्रोवाइड करते हैं। आप आ जाइए 1:30 बजे भी आ जाइए तो 1:30 बजे नहीं 2:15 बजे। Item 5, 1st April, filing number 9865 of 2024. बताइए फॉर व्हाट? पहले आपको एक बार टाइम मिल गया ना, एक बार टाइम मिल चुका है ना। क्या डिफेक्ट है आपको? कोर्ट फीस 49,000 पिटीशन प्लेट इज ओवर पर्सन ओवर ट्राइबल पर्सन उसको और पुअर बना दीजिए, 4 वीक्स उसको और पुअर बनाइए। अब रेस्टोरेशन भी फाइल करिए, ही विल बिकम पुअर। आप जब वकील का फाइल लेते हैं तो कोर्ट फीस नहीं लेते हैं साथ में? अरेंज कर रहा हूं 4 वीक्स FA filing number FA 9865 of 24. Counsel for the appellant pays for and is granted time till 18th of March 25 to remove the surviving defects pending. If the defects are removed within time, court is in the appropriate hearing on 20th of March. Timefees case, item number 406, WPC 1348 of 2017. स्टेट आप अपना जो ऑब्जेक्शन था जो आपने फाइल किया उसको अच्छे से फेस करिए। आज हम नहीं लिखा पाए लेकिन आप उसको प्लेस कर दीजिए, देन आई विल जस्ट रिजर्व उसको एक बार प्लेस कर दीजिए। There are two counter affidavits now, 10/4/2024 and 29/6/2024. इंक्वायरी रिपोर्ट आप प्लेस करिए। And I share it to the counter affidavit dated 9/4/2024. निष्कर्ष पढ़िए। हाँ जी इसको पढ़ दीजिए, मतलब इसलिए पढ़ाना चाह रहे हैं कुछ छूटे नहीं, ऐसा नहीं कि कोई एडिशनल ऑब्जेक्शन। In para 21 of the counter also we have stated that objection that without registering a registered sub-lease. That's right, वो तो हमने कल नोट करी है। एक बार खाली Yes. जस्ट गिव इट अ रीडिंग। निष्कर्ष as page number 36. यस
टाटा स्टील Yes. टाटा स्टील द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सब लीज हेतु डिस्क्रिशन के आधार पर चयन किया गया। पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को टाटा स्टील लिमिटेड के अनुशंसा के आधार पर अपेंडिक्स ए की भूमि का आवंटन किया गया। दिनांक 20/8/2005 को निष्पादित इंडेंचर ऑफ लीज की कंडिका 2 में अपेंडिक्स ए की भूमि का वर्णन है। कंडिका 2 में कहीं भी वैकेंट लैंड शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड राज्य के पत्रक सुवंशु दिनांक 8/6/2007 द्वारा मल्टीप्लेक्स जिसमें 3 स्क्रीन्स का सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल एंड फूड कोर्ट्स की स्थापना हेतु प्रश्नगत भूमि सब लीज पर देने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 20/8/2005 को निष्पादित इंडेंचर ऑफ लीज के कंडिका 2 में अपेंडिक्स ए की भूमि का वर्णन है तथा उद्देश्य का उल्लेख है, परंतु कंडिका 2 में अपेंडिक्स ए की भूमि का उपयोग मल्टीप्लेक्स शॉपिंग मॉल फूड्स कोर्ट हेतु करने का कोई उल्लेख नहीं है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड राज्य के स्वीकृत 23 पत्रांक सुवंशु दिनांक 8/6/2007 की कंडिका 11 में उल्लेख है कि पत्र निर्गत करने की तिथि से 3 माह के अंदर भूमि धारक को विहित प्रपत्र में इकरारनामा संपन्न करा लेना होगा, अन्यथा लीज स्वतः रद्द समझी जाएगी। टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रश्नगत अवधि में कोई इकरारनामा संपन्न नहीं किया गया, अतः टाटा स्टील लिमिटेड और पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सरकार के स्वीकृत्यादेश पत्रांक सुवंशु दिनांक 8/6/2007 की कंडिका 11 का उल्लंघन किया गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 107 के आलोक में टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट ये लिमिटेड 8/6/2007 का कौन सा डेट है? दैट इज द मेरा पत्रांक ऑफ डिपार्टमेंट। Where is that Patrank? They have any state? 8/6/2007. That is statement given, my lord, in their petition. Not against. Annexure is not there. Statement is given before annexure 9. वहाँ है statement 8/6/2007. Para 80, page 24. That it is stated and submitted that the request of the petitioner was forwarded by the Tata Steel Limited to the Deputy Commissioner ECB Jamshedpur on 27/7/2007. The proposal for relocation of Vishnupur lease area was approved by the appropriate machinery committee. Thereafter, by its order number 1844 dated A6/2007, the state of Jharkhand granted approval for relocation of 3.12 acres of land in Vishnupur lease area. Statement is there regarding Patrank 8/6/2007. Why nobody has annexed it? You have also not annexed it. Yes, but in the discourse में will go more forward. It is written that for the purpose for which the sub-lease was granted, that is for the residential purpose of the employees or further amenities like dispensaries and all, not for shopping mall and cinema hall and food courts complexes. So that Here is you say it was allocated for the purposes of shopping mall. no. It was sub-leased for the purpose of shopping mall and food courts. नहीं नहीं ये जो लिखा है उल्लंघन just a है। moment. पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिनांक 8/6/2007 द्वारा मल्टीप्लेक्स जिसमें 3 स्क्रीन का सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल एवं फूड कोर्ट की स्थापना हेतु प्रस्तुत भूमि सबलीज पर देने की स्वीकृति प्रदान की गई। दिनांक 20/8/2005 को निष्पादित इंडेंचर ऑफ लीज की कंडिका 2 में अपेंडिक्स की भूमि का वर्णन है तथा उद्देश्य का उल्लेख है। हाँ ऑब्जेक्टिव्स मतलब फर्दर कंडिका 2 में अपेंडिक्स ए की भूमि का उपयोग मल्टीप्लेक्स शॉपिंग मॉल फूड्स कोर्ट हेतु करने का कोई उल्लेख नहीं है। ये लेटर कहाँ है? ये वाला 20/8/2005. Start for the Where is the clause? Where is the lease? annexure 1. And where is this clause? कंडिका 2
Clause 2 of Annexure 1. page number, please. Page number 73. Okay, Appendice A. Page 73 में खंडिका 2 है. इसमें तो कुछ सब-लीज का बात ही नहीं है. The contents which have been modified due to various reasons, the details of this are given in Appendix A. We have given this statement regarding the objectives of आप that. स्टेटमेंट दीजिए, वो भी स्टेटमेंट दीजिए. आपने आपका कोई भी अपेंडिक्स उन्होंने लीज के साथ नहीं लगाया. Appendix A. Reference in the inquiry report, and we have made this statement categorically in the counter. आगे क्या है? Hello? आगे पढ़िए उसको पैराफोर. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड राज्य के स्वीकृत्यादेश पत्रांक सुअंशु दिनांक 8 से 2007 की खंडिका 11 में उल्लेख है कि पत्र निर्गत करने की तिथि से 3 माह के अंदर भूमि धारक को विहित प्रपत्र में इकरारनामा संपन्न करा लेना होगा, अन्यथा यह लीज स्वतः रद्द समझी जाएगी. टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ प्रश्नगत अवधि में कोई इकरारनामा संपन्न नहीं किया गया, अतः टाटा स्टील लिमिटेड एवं पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सरकार के स्वीकृत्यादेश पत्रांक सुअंशु दिनांक 8 से 2007 की खंडिका 11 का उल्लंघन किया गया. ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की 1882 की धारा 107 के आलोक में टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रजिस्टर्ड सब लीज एग्रीमेंट निष्पादित किया जाना है. टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा दिनांक 7/3/2008 को पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट फॉर लीज निष्पादित किया गया. उक्त एग्रीमेंट फॉर लीज की खंडिका 1.3 में उल्लेखित है कि after final resolution by the state government and or the competent court of law of the issue of quantum of rent and cess, the deed of sublease shall be executed by and between the parties on payment of subleasee of appropriate stamp duty and registration charges as would be applicable. उक्त एग्रीमेंट फॉर लीज की खंडिका 2.2 में उल्लेखित है कि the agreement shall remain valid till execution and registration of deed of sublease on 31/12/2025 whichever is earlier. उपरोक्त खंडिका 1.3 और 2.2 में स्पष्ट है कि टाटा स्टील लिमिटेड और पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच भविष्य में सब लीज एग्रीमेंट का एग्जीक्यूशन किया जाएगा. उल्लेखनीय है कि टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ रजिस्टर्ड सब लीज एग्रीमेंट निष्पादित नहीं किया गया. अतः उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि टाटा स्टील लिमिटेड और पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी 1882 की धारा 107 की रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 17 का उल्लंघन किया. टाटा स्टील लिमिटेड एवं पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दिनांक 7/3/2008 को निष्पादित एग्रीमेंट फॉर लीज की खंडिका 3.5 में उल्लेखित है. The sublessee shall only sublease portion of the built-up area initially up to the period of
their sublease, that is 31/12/2025, subject to their renewal only on renewal of the sublease of the sublessee. However, the sublessee shall not assign, underlet or part with the possession of the land or any part thereof. उक्त एग्रीमेंट फॉर लीज की कंडीशन 3.11 में उल्लेखित है कि द सबलेसी शैल यूटिलाइज द लैंड फुल्ली विद इन अ पीरियड ऑफ 36 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस एग्रीमेंट. उक्त एग्रीमेंट फॉर लीज की कंडीशन 4.1.2 में उल्लेखित है कि all building structures and other infrastructures to be installed by the sublessee on the land described in schedule shall belong to the sublessee, and the company shall not claim any ownership or beneficial interest therein by virtue of this agreement over the land described in the schedule. Until merit is not registered, they cannot claim ownership of it. टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा दिनांक 7/3/2008 को निष्पादित एग्रीमेंट फॉर लीज की उपर्युक्त वर्णित कंडिकाएं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 107 के उल्लंघन करते हैं. टाटा स्टील लिमिटेड एवं पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर के बीच रजिस्टर्ड सब लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट नहीं किया गया, बल्कि टाटा स्टील द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के साथ मात्र एग्रीमेंट फॉर लीज एग्जीक्यूट हुआ, जिसमें भविष्य में सब लीज एग्रीमेंट निष्पादित किए जाने का उल्लेख है. अतः स्पष्ट है कि टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की धारा 107 का उल्लंघन कर पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ बगैर रजिस्टर्ड सब लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए एग्रीमेंट फॉर लीज के माध्यम से प्रश्नगत प्रॉपर्टी की इंजॉयबल राइट्स को पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को ट्रांसफर किया गया है. टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सब लीज रजिस्टर्ड सब लीज एग्रीमेंट एग्जीक्यूट किए बगैर प्रश्नगत भूमि का डिलीवरी ऑफ पोजीशन पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर को दिया गया तथा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा उक्त भूमि पर मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल शॉपिंग मॉल का निर्माण कराया जा रहा है. पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ 500 रुपए के स्टाम्प पेपर पर निष्पादित निबंधित एग्रीमेंट फॉर लीज नंबर 16 दिनांक 7/3/2008 का इक्विटेबल मॉर्गेज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्पेशलाइज्ड कमर्शियल ब्रांच पटना में किया गया. उक्त मॉर्गेज के आधार पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा दिनांक 8/2/2011 को 40 करोड़ रुपए का कैश क्रेडिट सैंक्शन किया गया. टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा 7/3/2008 को 500 रुपए के स्टैम्प पेपर पर निष्पादित अनिबंधित एग्रीमेंट फॉर लीज की कंडीशन 3.5 द्वारा नॉन एग्जिस्टेंट सब लीज राइट्स ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान की ऑन द बेसिस ऑफ अनिबंधित एग्रीमेंट. टाटा स्टील द्वारा पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर्ड सब लीज एग्रीमेंट के साथ के माध्यम से सब लीज राइट्स कन्फर नहीं की गई. पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा दिनांक 7/3/2008 को निष्पादित एग्रीमेंट फॉर सब लीज के आधार पर इमेजिनरी एंड फिक्टिशियस सब लीज राइट्स को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मॉर्गेज कर 40 करोड़ रुपए का लोन स्वीकृत कराया गया. टाटा स्टील एंड पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के बीच रजिस्टर्ड सब लीज डीड एग्जीक्यूट नहीं होने के फलस्वरूप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 107 के आलोक में पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर को सब लीज राइट्स ट्रांसफर नहीं हुए. पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा सब लीज राइट्स लीगली प्राप्त किए बगैर मेसर्स फ्यूचर वैल्यू रिटेल प्राइवेट लिमिटेड, पैंटालून्स रिटेल्स इंडिया लिमिटेड, सिनेपोलिस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड शॉपर स्टॉक लिमिटेड के साथ एलओआई एमओयू के माध्यम से प्रश्नगत प्रॉपर्टी की Where is your senior? You will not adjourn for me. The time was fixed. Right? Continue. के साथ एलओआई एमओयू के माध्यम से प्रश्नगत प्रॉपर्टी की एंजॉयमेंट राइट्स ट्रांसफर किया गया. अतः पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा प्रश्नगत भूमि पर थर्ड पार्टी इंटरेस्ट क्रिएट करने के क्रम में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 107 का उल्लंघन किया गया. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग झारखंड राज्य के स्वीकृत्यादेश 16 दिनांक 8/2007 में कहीं भी पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रश्नगत भूमि की सब लीज राइट्स को मॉर्गेज करने अथवा ट्रांसफर करने का कोई उल्लेख नहीं है. लेसर राज्य सरकार द्वारा सब लीज हेतु प्रदान की गई स्वीकृत्यादेश में सब लेसी को सब लीज का राइट ट्रांसफर करने अथवा मॉर्गेज करने का अधिकार नहीं दिया गया है. पीएनएम इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड बगैर लेसर राज्य सरकार की अनुमति के तथा बगैर सब लीज राइट लीगली प्राप्त किए इमेजिनरी एंड फिक्टिशियस सब लीज राइट्स को ट्रांसफर किया गया तथा मॉर्गेज भी किया गया. उपरोक्त वर्णित भूमि आवंटी को टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा नॉन एग्जिस्टेंट सब लीज राइट्स मॉर्गेज से ट्रांसफर करने की अनुमति प्रदान की गई. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा निर्गत स्वीकृत्यादेश में सब लीज राइट्स के ट्रांसफर के संबंध में कोई उल्लेख नहीं है. अतः यह माना जा सकता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा उपरोक्त भूमि आवंटी को सब लीज राइट्स ट्रांसफर करने की कोई पूर्व अनुमति प्रदान नहीं की गई है. उपरोक्त भूमि आवंटी द्वारा बिना लीज होल्ड राइट्स लीगली प्राप्त किए लीज होल्ड भूमि की प्रॉपर्टी एंजॉयमेंट राइट्स मॉर्गेज सेल लाइसेंस डेवलपमेंट एग्रीमेंट इत्यादि द्वारा थर्ड पार्टी को दी गई.
किसी भी भूमि आवंटी अथवा टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा राज्य सरकार लेसर से लीज होल्ड भूमि की प्रॉपर्टी इंजॉयमेंट राइट्स किसी भी माध्यम से ट्रांसफर करने की अनुमति नहीं मांगी गई तथा राज्य सरकार को सूचना भी नहीं दी गई। अतः उपरोक्त भूमि आवंटी द्वारा बिना लेसर स्टेट ऑफ झारखंड की अनुमति प्राप्त किए, बिना लीगली सब लीज राइट्स प्राप्त किए लेसी टाटा स्टील इंजॉयमेंट लिमिटेड की एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट के आलोक में प्रश्नगत प्रॉपर्टी की इंजॉयमेंट राइट्स थर्ड पार्टी को दिया गया। उपरोक्त भूमि आवंटी द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ कनाइवेंस कर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 रजिस्ट्रेशन एक्ट इंडियन स्टैम्प एक्ट का उल्लंघन किया गया तथा बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1950 के प्रोविजंस को डेलिबरेटली और विलफुली डिफीट किया गया। यह स्पष्ट है कि टाटा स्टील लिमिटेड की मदद से उपरोक्त भूमि आवंटी द्वारा व्यक्तिगत लाभ हेतु जनहित के विरुद्ध कार्य किया गया। प्रश्नगत सब लीज के मामले में निर्धारित अवधि में रजिस्टर्ड सब लीज एग्रीमेंट निष्पादित नहीं होने के फलस्वरूप राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रदान की गई स्वीकृति रद्द हो चुकी है तथा सब लीज हेतु उक्त स्वीकृति को वर्तमान में जीवित माने जाने का कोई कारण नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 105 में उल्लेख है कि हु एक्सेप्ट्स द ट्रांसफर ऑफ सच टर्म्स, इसका तात्पर्य है कि ट्रांसफरी के द्वारा टर्म्स ऑफ ट्रांसफर एक्सेप्ट किया गया। प्रश्नगत मामले में लेसी टाटा स्टील लिमिटेड को रेंट अर्थात टर्म्स ऑफ ट्रांसफर एक्सेप्टेबल नहीं था। टर्म्स ऑफ ट्रांसफर अर्थात रेंट के संबंध में आपत्ति दर्ज कर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा दी गई स्वीकृति पर प्रश्न चिन्ह लगाया गया। यदि लेसर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वार्षिक लगान टर्म्स ऑफ ट्रांसफर स्वीकार्य नहीं था तो सरजमीन पर स्टेटस को मेंटेन किया जाना अपेक्षित था, परंतु टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा स्टेटस को मेंटेन नहीं कर टर्म्स ऑफ ट्रांसफर के डिस्प्यूट को सेटल किए बगैर रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट एग्जीक्यूट किए बगैर प्रश्नगत भूमि का डिलीवरी ऑपरेशन दिया गया। टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 105, 107 एवं 110, 110 का अनुपालन किए बगैर भूमि आवंटी को प्रश्नगत प्रॉपर्टी का डिलीवरी ऑपरेशन दिया गया। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की धारा 105, 107 एवं 110 रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 17 एवं 49 इंडियन स्टैम्प एक्ट की धारा 35 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा सतीश कुमार वर्सेस जरीफ अहमद एंड अदर्स में दिनांक 20/2/97 को पारित आदेश, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा राजेंद्र प्रताप वर्सेस रामेश्वरम प्रसाद दिनांक 28/10/1998 को पारित आदेश एवं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा मेसर्स एसएमएस टी स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मेसर्स चंदमरी प्राइवेट लिमिटेड में दिनांक 20/7/2011 को पारित आदेश दिनांक 27/10/98 को पारित आदेश द्वारा मॉडर्न फूड इंडस्ट्रीज के मदर्स में दिनांक 17/5/2000 को पारित आदेश के आलोक में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रश्नगत सब लीज कभी भी अस्तित्व में नहीं है तथा वर्तमान में सब लीज जीवित नहीं है तथा भूमि आवंटी को सब लेसी नहीं कहा जा सकता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 105 ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा राजा बहादुर कामख्य नारायण सिंह ऑफ राजगढ़ वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार एंड उड़ीसा में पारित आदेश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ एग्रीकल्चर इनकम टैक्स असम वर्सेस सिंधुरानी चंदुरानी में पारित आदेश, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा चिंतामणि शरणनाथ सादेव वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स बिहार एंड उड़ीसा में पारित आदेश और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया द्वारा कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस पनवारी टी कंपनी में दिनांक 19/4/65 को पारित आदेश तथा प्रीमियम रेसिडेंसी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड द्वारा रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से नॉन एग्जिस्टेंट सब लीज राइट्स की बिक्री के आरोप में समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि यदि टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा सब लीज के आधार पर सब लीज के अधिकार को बिहार लैंड रिफॉर्म्स के आलोक में रिकॉग्नाइज किया जाता है तो प्रश्नगत सब लीज को प्रीमियम सलामी के एग्जेम्प्ट रखने का कोई आधार नहीं है। टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा प्रधान सचिव राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रेषित पत्रांक 1600 दिनांक 4/9/2006 की कंडिका 6.1, 6.2 एवं 7 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा स्वीकृत सब लीज का कार्यान्वयन निम्न प्रकार किया गया है। टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा भूमि आवंटी को निर्धारित वार्षिक लगान सीधे कोषागार में जमा करने के बजाय टाटा स्टील लिमिटेड के पास जमा करने हेतु प्रेरित किया गया। भूमि आवंटी से प्राप्त वार्षिक लगान में 5% राशि कलेक्शन चार्ज के नाम पर टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा प्राप्त की गई है। उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा बिना राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किए राज्य सरकार और भूमि आवंटी के बीच इंटरमीडिएरी कार्य किया गया है। उल्लेखनीय है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 31 के द्वारा प्रोटेक्टेड बिहार लैंड रिफॉर्म्स 1950 द्वारा इस प्रकार का इंटरमीडिएरी इंटरेस्ट प्रतिबंधित है। भूमि आवंटी द्वारा बिना लेसर स्टेट ऑफ झारखंड से अनुमति प्राप्त किए, बिना लीगली सब लीज राइट्स प्राप्त किए लेसी टाटा स्टील लिमिटेड की एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट के आलोक प्रश्नगत प्रॉपर्टी ऑफ एंजॉयमेंट राइट्स थर्ड पार्टी को दिया गया।
भूमि आवंटी द्वारा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, रजिस्ट्रेशन एक्ट एंड इंडियन स्टैम्प एक्ट का उल्लंघन किया गया। भूमि आवंटी द्वारा टाउन के डेवलपमेंट के नाम पर टाटा स्टील लिमिटेड की एक्सप्रेस इम्प्लाइड कंसेंट प्राप्त कर निःशुल्क बिना सलामी चुकाए मिली भूमि को बिना राज्य सरकार से अनुमति प्राप्त किए मोनेटाइज किया गया तथा भूमि की मार्केट वैल्यू को लेवरेज कर अप्रत्याशित लाभ कमाया गया। चूंकि राज्य सरकार को प्रश्नगत भूमि से सलामी प्राप्त नहीं हुई, अतः यह कहा जा सकता है कि भूमि आवंटी द्वारा भूमि के मोनेटाइजेशन के से कमाए प्रॉफिट में राज्य सरकार को कोई लाभ नहीं। Is for Tata Steel. You have read the objections. There are multiple objections. That was not the only objection. As has been, we have read the entire text of the objection of the report. What do you have to say to this? You have not. What is this objection? This report was ultimately accepted by the government. It has not been accepted. It has not been accepted. This is a report, fact-finding report. The government has to act or reject. Therefore, it is still the same state. Your Lordship may see the affidavit by which this inquiry report has been annexed. It itself says that it is a report which has been forwarded to the government. And government has never accepted this report, and that is why in all other cases also, this preliminary fact-finding was done. But the government has not accepted the report, and that is why the order is there. If your Lordship, her ladyship may kindly, yes, for that, kindly see the counter itself. In para, when it is stated about the inquiry, it is only stated that the inquiry report has been sent to the government. And this inquiry report which has been sent to the government, it is not only in this case. All individual cases, my lord, show cause was given and ex parte inquiry was being done and it was forwarded to the government. And then, if her ladyship may see Ashiana judgment, pursuant to these inquiry when it was before the state government has not given any approval. And that is what was noticed. Kindly see para 24 of that judgment, Ashiana judgment. Can we have a copy? Para 24. Yes. Para 24, in each individual case, this inquiry has been done. In the light of the order dated 17/12, page 6, passed in WPC, an inquiry report of Tata Sub-lease has been prepared by the inquiry committee headed by Divisional Commissioner Singhu, and the same has been forwarded to the government, which is under consideration of the government. And this under construction is what has been repeatedly been said. Kindly see para 33. May I place it, Your Ladyship? That earlier WN connected matters which are allowed in favor who had moved the court for similar release in which state government was given an option to conduct inquiry and complete the same, which was further extended by the court on it. Now there are references in the counter affidavit of other reports, but the inquiry under the orders of the court is under submission before the government, and further extension of time by 6 months has been sought for. Prayer for extension is devoid of any merit and is made after 8 years only to procrastinate the matter and accordingly rejected. Notes of arguments have extracts of the other inquiry report which is not relevant for the present. It deals about proposed mechanism granting consent in such matter, but it does not refer to any undue influence of fraud in the process of consent already granted by the competent authority in terms of the agreement for the sublease. It states that there was error in the decision of the government resulting in loss of revenue to the state. Argument of loss of huge revenue in the grant of sublease by the state which had only a reversionary interest is flawed to the core and misconceived. Reversionary interest is limited by its very nature to the right to retake possession of property if the conditions were not fulfilled. Lessor cannot raise any financial claim beyond the terms of the lease.
When sublease is granted as per the terms of lease, the paramount owner cannot claim anything more than what is provided under the terms of the lease. Further arguments like the absence of approval by the cabinet to such long-term settlement and reconstitution of the appropriate committee are beyond the terms of the lease and post litium in nature, and therefore it cannot be a ground to withdraw approval which has been duly granted by the said committee. State is not at impunity to review the accomplished state of affairs like the lease granted to Tata Steel and the terms thereunder. It has been held in so and so, then para 30 ITC judgment. Facts of the matter remain that neither petitioner nor the state can resile from the terms of the lease. Once there is an agreement for sublease, after due approval of the appropriate committee, the same cannot be annulled. If any party is permitted to resile from the lease agreement on the ground that it was financially not viable. In this case, Yes. this particular agreement of lease has been approved by the government. Yes, my lord. The terms and conditions of the agreement of sublease. Agreement of sublease, my lord, the terms and conditions granting sublease, which form part of the agreement of sublease, is approved by the government up to the highest level. And then after 5 years, they turned back and then they started inquiry. You see, the report is saying that these terms and conditions have been given suo motu by Tata Steel. Show me that the terms and conditions which are incorporated in the agreement to sublease has been approved by the government. Because in this agreement, Yes. there is neither any requirement nor nor it's a fact that the state is a party to this agreement of sublease. That Yes, is not because there. the agreement sublease will always be done by Tata Steel. That's right. And So this particular judgment which you are referring Yes. says that neither the petitioners nor the state can resile from the terms of it. Yes, resile from the agreement. So, my lord, sir, her ladyship see the mechanism which was provided. My lord, once the lease has been given to Tata Steel, it was for the Tata Steel to give a sublease or not to give a sublease in terms of the Transfer of Property Act. But there was a restriction that if Tata Steel wanted to give any sublease, then the approval of the state government was required to be undertaken. That restriction was there in the lease of the Tata Steel. And that approval mechanism which was devised for giving the approval was setting up of an appropriate machinery committee. That's right. And the examination by the appropriate machinery committee with respect to any sublease granted by Tata Steel to be approved up to the level of the state government. So that entire process was followed and it was approved up to the level of the state government. The agreement of sublease was approved. The terms were approved. Terms were approved, my lord, the conditions were approved. The commercial rent, the There yes. are many terms. No? It is one. If the terms and where is the approval of the terms and conditions? Yes, sir. So her ladyship may see the annexure starting from the yes. Annexure 5. Her ladyship may see page 106, 107. कल आपका वो लिस्ट कहाँ चला गया? एक list of dates. लिस्ट भी आप मुझे प्रोवाइड कर, पता नहीं कहाँ चला गया this list. ये एक list of dates में. ये क्या है? What is this? ये क्या चीज़ है? ये सारे judgments क्या हैं? कैसे यहाँ से चला गया? वो है क्या? हाँ वो ये बताइए मुझे इसमें. इसे जहाँ तहाँ मत लिखिए कोई भी चीज़. केस का नंबर लिखा रहता है, फाइल में लिखना है. हाँ बताइए. 107 annexure 5 जिससे state government ने approval दिया. The terms were incorporated there. 107. Yes, annexure 5. But this is by the state to the deputy commissioner and approval. Shri I just read महाशय निर्देशानुसार उपयुक्त विषय सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत जमशेदपुर अधिसूचित सेट में वार्ड नंबर सो एंड सो, खाता नंबर सो एंड सो, प्लॉट सो एंड सो, रकबा सो एंड सो लीज की भूमि 78 लाख रुपए प्रति एकड़ की दर से 2,43 लाख रुपए का मूल्य का 5% वार्षिक आवासीय लगान कुल इतना 12 लाख 100 रुपए
अलावा सेस की देयता पर दिनांक 31/12/2025 तक के लिए श्री सो एंड सो निर्माता की स्थापना हेतु दर पट्टा सबलीज पर दिया जाए. तो मतलब the first Decision to sublease. yes conditions, it says grant of sublease on the value and the Value rent period. when rent period is mentioned. Then further renewal clause is also mentioned. जब जब टाटा स्टील की लीज भूमि का नवीकरण होगा तो इसका भी नवीकरण होगा. दर पट्टा सबलीज पर देने के लिए निम्नलिखित शर्तें भी लागू होंगी. दीज आर दी कंडीशंस. प्रदेश में व्यवसायी एवं शिक्षित गुरुग्राह नौजवान हितों की रक्षा मद्देनजर जमीन का पुनः सबलीज तो नहीं परंतु पक्का स्ट्रक्चर तथा होल्डिंग या कियोस्क का निर्माण निबंधन अनिवार्य होगा और इसकी सूचना जिला प्रशासन एवं टाटा स्टील दोनों को देना होगा. जिला प्रशासन एवं टाटा स्टील लिमिटेड को निर्देश दिया जाता है कि सबलेसी द्वारा निबंधन के माध्यम से बेचे गए पक्का स्ट्रक्चर को व्यक्ति स्थानीय खरीदेगा, उसे सबलेसी के रूप में मान्यता दिया जाए एवं टाटा स्टील लिमिटेड खरीदार को सबलेसी नामित करेगा एवं उस फोर्सेन पर पूर्व सबलेसी का नाम हटाए जिससे व्यवसायी के हक में रक्षा होगी. आदेश निर्गत होने की तिथि से 3 माह के अंदर कार्य प्रारंभ करना होगा और 2.5 वर्ष या 30 माह में निर्माण कार्य समाप्त कर राज्य कर सरकार को सूचित करना अनिवार्य होगा. वर्णित काल खंड में निर्माण कार्य पूरा नहीं करने या समय सीमा में सरकार को सूचित नहीं करने पर लीज स्वतः समाप्त हो जाएगी. वर्णित भूमि पर मल्टीप्लेक्स जिसमें 3 स्क्रीन करता एवं फिल्म निर्माण I think one line is missing in this one. Then next, कर्ता श्री प्रकाश झा सो एंड सो भूमि का योग के रूप में कोई अतिरिक्त निर्माण करना चाहे तो जिला प्रशासन निर्णय के लिए सक्षम होगा. साथ ही साथ अतिरिक्त निर्माण पूर्व में दर्शाए गए निर्माण के अतिरिक्त होगा, बदले ही वर्णित भूमि में कोई भी निर्माण कार्रवाई व्यवसायी हो. टाटा स्टील जिन सुविधाओं के लिए जो मूलभूत सुविधा जमशेदपुर के नागरिकों को प्रदान करती है वही तमाम मूलभूत सुविधाएं मल्टीप्लेक्स को भी उपलब्ध कराती रहेगी. इससे प्राप्त राशि सरकारी खजाने अर्थात बजट सिर्फ इतना के अंतर्गत जमा होगी. प्रतिवर्ष उससे प्राप्त होने वाली देय राशि सरकारी खजाने में जमा नहीं होने पर पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी. टाटा स्टील के तहत संपन्न लीज डीड एवं समय समय सरकार के निर्देश भी इस पर लागू होंगे. जिस प्रयोजन होती सबलीज दिया जाएगा उससे इस भूमि का उपयोग नहीं करने पर सबलीज स्वतः समाप्त हो जाएगा. लीज शर्तों का उल्लंघन करने पर दंड शुल्क वसूलना होगा. 3 माह के अंदर भूमि धारक को विहित प्रपत्र में इकरारनामा कर लेना होगा, अन्यथा स्वतः रद्द हो जाएगा. विहित प्रपत्र इज ऑल्सो मेंशन. एंड देन आफ्टर What दिस is this beef butter? pardon What is this beef butter? In the prescribed form. a prescribed form. So What the is that? lease which has been given to us by Tata Steel was as per the prescribed form of Tata Steel. Sublease. This sublease document is as per the prescribed, this Yes. agreement of sublease. Yes, this is the state of this is a uniform sublease which has been given to everybody. You see, your document is not a sublease. No, It's an agreement for sublease. So that is a document circulated by Tata, this state government. कि इस फॉर्म में कर लेना है. Agreement से जो sublease होगा तो दोनों में फर्क है. Lords, may I point out one thing? दोनों both are not one and the same thing. They say that there is a circulation because circulation of that being prapatra, yes, right? That also contains the terms and conditions. Certainly, yes. is this the same document? Is this the same terms and conditions which have been mentioned in your agreement for lease? Did they circulate this agreement of lease to you to be executed? That agreement I will doubt that the state government would have No. circulated No. because that They are talking about some prescribed format for the agreement. Lease. For the lease. So once the sublease is to be executed, her ladyship may say See, this it has to be particular- in the prescribed format. See, you do not know who will prescribe the format of lease. There's The no point statutory is, requirement. they may not be. There is not a statutory Yes. requirement, but the approval which has been granted prescribes that within 3 months, in the prescribed form, the lease is to be executed. Failing which, it will be cancelled. Lord, may I point out one thing?
समझने दीजिए, पहले इनसे समझने दीजिए, आपसे भी समझेंगे, ठीक है? This is one of the condition, and it is not your case that this agreement of sale was circulated by the state. Neither it can't be your case at all. That is It not your said case. agreement for sublease was to be entered into. So now this was given to us by Tata Steel, this agreement. It's a That standard is a separate format. thing. हाँ. But this Tata Steel may circulate anything, but this particular execution of sublease was subject to certain conditions contained in this letter dated 14. So all these conditions have not been violated. If our ladyship may see the No, sublease. I am just talking about this covering this particular prescribed form. So the prescribed form, this is not the stand taken that the sublease is without the prescribed form. They say that it has not been executed within 3. This is the objection in the report. No, Whatever it is, yes, right? so You not say Yes. which has not been approved so far by the government, right? Yes. You want this court to issue a mandamus that they should register the lease. I say that they should not interfere in the completion You of the see, formality. the point is that we have seen yesterday that you entered into possession by virtue of certain direction issued by the deputy commissioner or whatever. Yes. So your possession is not illegal. First Yes. thing, some permission was there. But what is your status? Will that entitle you to seek a mandamus for execution of a registered deed? But I am saying, if your lordship may see my prayer, what is my prayer? Kindly Let us just see have a your look prayer. to my prayer. I am not saying that first prayer is आप including. पढ़िए, पूरा ही पढ़िए. First, I'll read it. Appropriate writ, including writ of declaration declaring that respondent state of Jharkhand cannot interfere in any manner whatsoever with the peaceful enjoyment of right, title and interest over the property subleased in favor of the petitioner. Subleased तो अभी हुआ नहीं, ठीक है? Not yet subleased. Subleased in favor of the petitioner having an area of so and so situated at plot number so and so. For issuance of further appropriate writ, including a writ of declaration declaring that alleged pendency of the inquiry in the matter of sublease against the petitioner by the state government cannot in any manner affect the grant of statutory clearances or administrative approvals required in law by the petitioner for making its multiplex cum mall functional over its subleased property after sublease has been So granted. this has already been Yes, that's- taken care of. So I Three. don't think that this is relevant. At present, it is not relevant. They, time to time, they make some objection, but ultimately, At present, you don't have any problem regarding enjoyment of property. yes, except As that I third-party understand. rights, well, the property. Not only third party rights, you have also mortgaged the property. So I just want to know, you have mortgaged the property to bank and you have taken some money. Normally in a case of lease, there is a restriction regarding further creation of any encumbrance on the property. So this is one of the objections which they have taken in their report. But that So report therefore, is not accepted by the state government as yet. No, maybe not accepted, but it is not even disputed by you. Whatever, they have placed the inquiry report on record, right? So therefore, this court will certainly see as to whether on the face of the inquiry report, whatever be that, and on the face of the enclosure which they had circulated, which is not on record, which none of the parties have brought on record, that what was the terms and conditions. I can understand that whatever was the terms and conditions in the sublease were also incorporated in the agreement. It just became an agreement because maybe that certain issues were not yet finalized. That is a separate thing. But was the terms and conditions which was mentioned in the format of sublease? So, well, that the state government will have to disclose That's whether they have given any format or not. It is mentioned. No, they say it shall be as per the requisite format. Yes. But the requisite format, whether they have given any requisite format or the agreement of sublease which has been done by Tata Steel is not as per the So requisite therefore, format. you see, when you are seeking a mandamus from the court that the property should be registered as a sublease, so these things we have to check. We cannot shut our eyes to all this.
See, this is very important. And apart from that, one letter which is mentioned in para 12 of your writ petition, you have mentioned it, that is not on record. And as per the inquiry report, even in that letter, it was mentioned that it has to be registered within a period of 3 months, as per the inquiry report. But that the terms and conditions of that letter is also not on record. No, it has to be not registered. It was an agreement for lease, sublease, to be executed within 3 months. Kindly see that. That is there. This letter, this particular Yes, letter. kindly see that letter. No, this paragraph 12. Yes, para 12 which they are saying. Sorry, para number. Para 18. Para 18. Yes. Para 18. But page 108 may itself be seen that para 18 what is there is in 108 also. इसमें भी वही है. हाँ 3 महीना लिख रहे हैं. 3 माह के अंदर भूमि धारक को विहित प्रपत्र में इकरारनामा कर लेना होगा, अतः स्वतः रद्द हो जाएगा. Then this was further amended because of change in the इकरारनामा is what? इकरारनामा is agreement. Agreement for sublease. Sublease, yes. Where is the Vihit Prapatra? So Vihit Prapatra, they have to say that they had given a Vihit Prapatra. This is not taken an objection in the report that Vihit Prapatra. So far as the substance of the agreement is concerned, if our ladyship sees the substance of the agreement. You see, in a writ jurisdiction, and before issuing a mandamus, these things are required to be absolutely clear. Otherwise, the civil court has a jurisdiction. They can enforce it. Whatever they write. Otherwise, if this is the prima Yes. facie view, then it has to be referred to DB Why because there is a coordinate bench decision. Yes, we will see that what is to be done. Yes. We'll certainly see that what is to be done. May I cite some authorities on that? No authority is required. There is a coordinate bench decision which is binding on me. I'll take care of that. Right? And while certainly I'll take care of that. If I want to differ with that, I will take care of that. I will not go beyond the judicial discipline. That I will take care of that. I think there's some factual haziness in the matter which your lordship wants clarity on. Whether there's a Vihit Prapatra or not. Vihit Prapatra aspect, my lord, the state government or Tata Steel can say. That is what I'm saying. I just wanted to be clear. May in what please don't pray for time. I will conclude the hearing today and then we'll figure it out what is to be done. Because these are things which are coming up. And before issuing a mandamus for registration is straight away a mandamus. Correct? There are no option but to register it. But it's a command. But It's a but command. as per the terms and conditions. So therefore, when we talk about a mandamus, then the court, while issuing a mandamus, has to be fully satisfied that it is a case where a mandamus is to be issued. There's Unless no, I am fully satisfied with that. there's no dispute about it. So what I have understood, if your lordship permits me subject to Mandamus, there is no dispute that the case of the petitioners was processed in view of clause 8 of the AMC sent the names to the government approved it. And after the government approved it, there is an order which my learned has read, Annexure 5. It says that the lease deed or the agreement must be executed in the prescribed format within a period of 3 months, or it shall be automatically lapsed. So my answer, Lord, is I am not taking sides of either party. I will not even gain anything. Whatever rent comes, I will have to pass on to the state after retaining 5%. So the point is, Lord, there cannot be automatic lapsing of a right which is created. Some right has been created. There are judgments, Lord, in the context of mining law that automatic lapsing does not happen. Certain. Apart from that, factually, after the order was passed, much water has flown, there is an agreement to sublease executed. Then suddenly, they cancelled all the sublease. The state government cancelled it. The sublease has been cancelled also. It was cancelled. Then that order was set aside by the High Court. And the High Court said that, well, this agreement, this has been done without any inquiry, let the inquiry be carried out. One thing must be also noted, while ordering that an inquiry can be carried on, the order was set aside, the High Court said that the interim order granted earlier will continue till the inquiry ends. And the interim order is that you will carry on construction at your own cost, will not claim equity, and you will create third party rights. not create. Create. Permission was given to Very create. well. So these things will continue. The point here is,
Sub-lease is not executed in terms of the Bihar Land Reforms Act. The Bihar Land Reforms Act, Section 7E, at that point of time saved the sub-leases granted by Tatas like Tata Motors, Cummins, etc. But this sub-lease will be executed in terms of Section 108 of the Transfer of Property Act. Your Lordships have seen 108. 108 grants the lessee the right to sub-lease subject to any agreement to the contrary. There is no agreement to the contrary, rather there is an affirmation by the main lease deed that there is no right to sub-lease. But the use of the word prescribed format may pale into insignificance because there is no such prescription by law, and there is no such prescription to my knowledge also. In absence of minutes, let us assume that there is a prescribed format, we have not been able to minutes. If there is, if the state says there is a prescribed format, there is a prescribed format. So only if your Lordship is otherwise satisfied that a case has been made out for issuance of a direction to the state to register, your Lordship may indicate that it will be registered in the prescribed format. I am also saying, Lord, That in is the all. prescribed format. Beyond it, the court, if otherwise your Lordship And is in satisfied, terms of the condition prescribed under Annexure 5, subject to all conditions that being satisfied. And her ladyship may see even the lease, sub-lease which is there, it also mentions all those conditions specifically. Whatever be the conditions, neither my friend nor I can decide here, nor your Lordship will can be called upon to decide the term. Whatever terms and conditions is fixed between the parties, either required by statute or agreed, will form the terms. We cannot really ask that this should be terms. Whatever the state government, Tata Steel, and If the state government at the time of executing the registered deed finds that one or the other party has not acted in terms of that agreement, in terms of the agreement, in terms of the prescribed form, like suppose there is a prescribed form that no third party right will do. No, that Let's assume, yes, right, and they still come to know that yes, there is a third party right created. yes. Then still they will continue with that. That chances of that happening is less, I'm saying, because the terms and condition will govern my future. So anything antecedent to the execution of the agreement cannot be a term and condition of the agreement. You So see, that only chances- two things can happen. Yes, ma'am. Possession has been given with permission. Permission, construction made. Construction made, everything made. Your status, the status of the petitioner can be only two things. Either a month-to-month tenant or fixed term lease. Yes. There cannot be any third status. There cannot be. Today, I cannot anticipate any third status. licensee, And licensee if- the one. It's not a License, license. it's a lease, 100%. It's a lease. They are taking rent. Yes. So it is either month-to-month tenant or the status is of that of a lessee. Correct. Correct? Correct. These two things. Secondly, none of them have taken, if there is any violation of any terms and conditions. Let us assume for a moment, Yes. if there is any violation, it is for either Tata Steel or the state to take steps for termination. Yes, yes. Maybe the termination of tenancy or maybe the termination of lease. Yes, yes. Right? None of those steps have been taken so far. Therefore, there is no such approval of the state government so far with respect to the inquiry report. Whatever be the illegalities, irregularities pointed out, that still has not been taken care of by the state government, nor any step has been taken to terminate or do Correct. anything in connection with it. Absolutely. This is the factual scenario. This is the factual scenario. The factual scenario is that Therefore, the discretion as to whether they will enter into the sublease or not is still with the state government. state. Therefore, that discretion whether they will at all enter into the sublease or not, being still with the state government, and your agreement of lease also says that it is till 31/12/2025 Yes. or whichever is earlier. Coterminous with the state. So, as it is, whatever be your status, It will end on 31st. it will end on 31st of December 2020. But the right of renewal is there, her Subject to ladyship. Tata Steel's lease being renewed on So it's specifically mentioned in the terms and conditions that there is a right of renewal. No, that's So, correct. That's correct. But Provided The lease that- of Tata Steel is no, renewed. no. Not only that, provided your lease is Yes, yes. registered, my lease is So registered. you yes. will be able to enforce that condition only when your lease is That is registered. the only Otherwise, purpose. you will not be able So, to. Manoj, Lordship is kindly see the absolutely right. conditions, Annexure 5, page 107. To my understanding, that is the purpose of getting the lease deed executed. Apart from this, there can be financial assistance, which I don't think, if the or whatever it is, the purpose is absolutely correct, Your Lordship.
unless they have a lease, there's nothing to be renewed. So their fate will be kept hanging at the instance of state government for all times. So your lordship is absolutely justified in asking a question. Number one, Mandamus, you are asking where is the legal right, where is the legal duty. So the point is, the duty and rights are always flowing from the fact that I have constructed a huge commercial See, space. you are enjoying the property, But your enjoyment will continue as a month-to-month tenant. This again is also not because there are some commercials to it. Today, if my learned friend, I don't know, I think I am correct in saying I don't know much about it, has to lease out to anyone else, a multinational. They will say, where is your lease? Why should I come and become a tenant? So the purpose Only tenancy which we have been able to create. So Malad, the sub-lease, point is, it is also giving a bad name to the city of Jamshedpur for doing business. Today, some big now company wants to come and open a shop, their retail shop, they will not open. They'll say, where is your lease? How are you granting me a further tenancy? So all these issues are there, once commercials are there. That inaction on the part of the state government is something which lordships can take care of and direct them to take a call on it, or to execute the lease deed as has been done in Ashiana, subject to differing. Annexure 5, Malad, may kindly have a look at ladyship page 107. Even with respect to sublease, further sublease, the permission is given, third party right. And it is even stated that it should be re-entered by Tata Steel, page 107. Just want to read that. That is there. So, and Tata Steel will substitute the name. The whole purpose was, when commercial buildings were being constructed, the whole purpose is that the commercial buildings can be further sublet so that it can be sold in the market. Certainly. There's no argument will be what, because it is lunchtime and we should not detain your lordships. I think you want to say anything? Yes, ma'am. You The just. same page, my lord, annexure 5, the page 107, they are saying that holding a kiosk का निबंधन अनिवार्य होगा. That is what we are saying, my lord. Registration is necessary. In next paragraph, it is written, जिला प्रशासन एवं टाटा स्टील लिमिटेड को निर्देश दिया जाता है कि सब लेसी द्वारा निबंधन के माध्यम से बेचे गए पक्का स्ट्रक्चर को व्यक्ति संस्था खरीदेगा. So निबंधन के माध्यम से you have to first register the sub lease. That has never been registered. So who is gaining out of this chaos? No one. Are you? That is the, my lord, इसीलिए stated in 226 इसीलिए petition. Who is gaining out of this chaos? not without registration. That is the main issue yesterday. You have not taken any step to evict them, have you? And my lord, so far as concerned. Have you taken any step? And you will not. ऐसे step. Earlier, my lord, chaos status quo चलते रहेगा और आपका कारवां चलते रहेगा. Status quo was applied in the year 2012. In my lord. this case, status quo. In the year 2012, my lord, thereafter construction done on their own risk and cost, my lord. That's It is right. stated in the order of the owner, on their own cost and risk, my lord. So now they have constructed and taking the plea that it has been constructed and now it can. So my lord, that was on the base of their own risk and cost. Government is losing out on revenue, I believe. 110 crores of rupees is being lost every year. Arguments concluded, you can file your short notes. Please do that. That will be relevant because it has eminence for a large number of cases. So kindly do that. You will take 1 week time with this submission. 1 week. 1 week, sufficient. Short written notes of argument on the basis of the arguments advanced during the court proceedings we file within a period of 1 week from today. That is all. Yes. Or it is that? Incorporate every little thing, right? Because I've just gave short dictation yesterday at the time of writing. Facts, my lord, we'll put it one admitted facts and then brief submission. Something has to be done. It just can't go on like this. It has to be resolved. It has to be taken to a logical. That resolution has to actually come from the state government. It is not the court duty to get. I can understand everyone's predicament, but the state government has to act in correct earnest
But it will not act in correct earnest, no? Your 2015 lease. से इंक्वायरी का कहानी चल कोई रही है। फायदा नहीं है आज मुझे जमशेदपुर इज नॉट ग्रोइंग बिकॉज ऑफ दिस इट इज नॉट दैट पीपल आर नॉट ट्रांजैक्टिंग जमशेदपुर इज नॉट ग्रोइंग इट्स द बेस्ट सिटी ऑफ झारखंड द मोस्ट वेल planned city that area it's not growing As little knowledge I have, financial institutions are not extending home. it is not They are very reluctant in doing so. 100% no one will know where do I get it say where is your deal there is no deal and what happens is all these promote corruption otherwise आपको क्या लगता है क्योस किस लिए बना होगा? तो है ही, जहाँ डिस्क्रिप्शन होगा वहाँ करप्शन होगा, वही होता है जहाँ डिस्क्रिप्शन खत्म करप्शन खत्म। डीड एग्जीक्यूटिव हो जाएगा तो क्या ही बचेगा आप लोग को लेन देन करने के लिए? नहीं, स्टेट यही स्टेट है जहाँ पे ऐसा होता है मेलोड। जब बाकी बड़ा स्टेट में तो हर जगह में योर लेडीशिप इज अवेयर नाउ दे आर मेकिंग 2233 लाइक बॉम्बे somebody was telling me a particular area is identified as a special construction zone. It first went to Thane, then it went to Panvel. Now another area has been identified 400 acres special construction zone. इनर्शिया है ना हाँ। हमारे स्टेट का, हाँ, इट इज किलिंग अभी This नया inertia of our state is killing us. ये मुस्कुरा रहे हैं। ये क्या करें ये तो बहुत ये बेचारे क्या करेंगे। बस बिगेस्ट विक्टिम स्टेट से ज्यादा बेचारा तो कोई है ही नहीं झारखंड। सारा आपको जो भी आप करना चाहते हैं पब्लिक के लिए बिना रेवेन्यू के कर लेंगे। रेवेन्यू नहीं जनरेट होगा, आपका जीएसटी कहाँ से आएगा? कंजम्पशन नहीं है, इट इज कंजम्पशन डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स नहीं आएगा। माइनिंग से कितना पैसा आप सेस से और ये सब से आप कर लेंगे। चलिए।